ହେଲା ओके नाइस केतला बाहर जाऊ बाहर केतला सेकंड हाफ घर को तो रात 10टा 10:30 ठीक है हो रेस्प्रेस हो जाओ हाँ ठीक है ओके नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ जय मां समले आशा कर भले थे आप प्रिपेरेसन भले चली तो चलतु आज सेसन को आरंभ करवा गोटे धुआंधार और दमदार सेसन टोटाल जून मासर करेंट अफेयर्स को आम कवर करवा सर मे जून मंथली पीडीएफ दिंतु सीबीटी 2 10 रे अच्छी निहाती 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 देदेवी आज जून सरला मु पीपीटी देदेवी पीपीटी पढ़ी नब तापरे आपण मानकर एटी मु मे मासटा आउ थरे अलगा सेशन नेबी से अलगा सेशन रे आपण मानकर मे मासर से कंटेंट मु कवर करबी चलंतु प्रथम प्रश्न को आसीबा सीधा समय नष्ट न करिके प्रथम प्रश्न कहूची मिशन क्वीन पाइनएप्पल वाज लॉन्च्ड इन वी स्टेट एबे तुमको फील हबो कि वीकली रिवीजन रो पावर कौन डेली पढ़ी कि डेली रिवीजन रो पावर कौन ता सहित मंथली पढ़िले परे मते केते मंथली मन पड़ुची मु सब बेले से कहे सकाळे डेली मु 8:15 रे क्लास नहीं के आसु कि तमे माने हो कोन बहुत 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 चालाक पिला माने नाही सर मु वीकली और मंथली करबी देखो तमे जदी आज बुझी परछ बढ़िया कथा हला चलो तो मिशन क्वीन पाइनएप्पल मंथ लॉन्च इन वी स्टेट को स्टेट आपन लॉन्च इज मते कहि दियंतो स्टेट ना हो आपन कोन त्रिपुरा ओके त्रिपुरा 236 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट हम आपंकर पाइनएप्पल को बाहर को एक्सपोर्ट कराबो आपंकर बाहर को एक्सपोर्ट कराबो ताको केमिति डेवलपमेंट आपंकर क्वीन पाइनएप्पल पय कराइबो आपनकर देखि पाले एठी जे आगु बढ़िबा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हां कोन मते आंसर कोन हो तो आंसर है आपनकर के अरुमुगम इज द करेक्ट आंसर के अरुमुगम is the correct answer okay तो a book titled India's first Olympic gold was released by PT Usha release करछन PT Usha किंतु ऑथर के आपन मानकर के अरुमुगम आपन मानकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2026 वर्ल्ड हंगर डे 2026 रो थीम कोन मते कहि दियंतु वर्ल्ड हंगर डे 2026 रो थीम इज द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स द एंड ऑफ हंगर is in our hands okay hunger day ro theme eta next question देखिबा we state launched the आदर्श शहर समृद्धि योजना को स्टेट लॉन्च करछि आदर्श शहर समृद्धि योजना व्हाट इज द करेक्ट आंसर हां तो तांकर शहर गुडा केमदी समृद्ध होबो ता पई छत्तीसगढ़ गोटे स्कीम नै केछि गुडाय पैसा खर्च करिवो टाउन गुडा ऊपर टाउन को डेवलप करैबो हला टाउन को डेवलप करैबो टाउन डेवलपमेंट रो मन पडिला भुवनेश्वर डेवलपमेंट आपन को केमिति लागे मते कोन भुवनेश्वर डेवलपमेंट केमिति लागे मते कहि परिबि कि आपन माने चलो आगु बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा वी स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ ए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड माने गोटे कार्ड नबो सब प्रकार काम करे राशन पाइबो हेड तमे जहा जहा मिलुचे आ कोन माने लेबर कार्ड सब जिंस स्टेट रो सब काम गोटे कार्ड अंडर हबो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी directed officials to create a one stop multi-purpose unified for every citizen in a state hela which Indian city is the host of 2028 Asian Indoor Championship what is the correct answer को इंडियन सिटी माने होस्ट करिवो 2028 रो एशियन इंडोर चैंपियनशिप को इंडोर गेम चैंपियनशिप को तो क्या हो भुवनेश्वर अरे हमर भुवनेश्वर तमरो भुवनेश्वर हम समस्त भुवनेश्वर हला भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ which player broke the world record in the men's javelin throw F64 category at the Indian Open International Para Athletics Championship 2026 what is the correct answer which player broke the world record in the men's javelin throw F64 category at Indian Open International Para Athletics Championship 2026 तो आंसर है सुमित अंतिल is the correct answer okay सुमित अंतिल is the correct answer next देखिबा वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे वर्ल्ड नो टोबैको डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए 31 मे रे वर्ल्ड नो टोबैको डे आपन एटी ऑब्जर्व करा जाए ठीक अछि जिबा आगु बढ़िबा जानेट जनसा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री समस्त आंसर करिवे जानेट जनसा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री को कंट्री नो प्राइम मिनिस्टर मते कोंदो
स्लोवेनिया इज द करेक्ट आंसर कौन है स्लोवेनिया तो जानेट जनसा was elected as the Prime Minister of Slovenia and took office in May 2026. He began his fourth term as Prime Minister, leading a 5-year center-right coalition government. हमको ताकू को जानिबा किसी दरकार नहीं. Next question देखिबा. Next question कहूची who won the 2026 Scripps National Spelling Bee title? Very very important. आपनकर कहिला Scripps National Spelling Bee title आपनकर के जीतिची श्रेय पारिक जीतिची. वर्ड आपनकर कोन थिला फाइनल वर्ड थिला ब्रोमोक्रिप्टाइन आपनकर लास्ट वर्ड थिला. ओके किए जीति श्रेय पारिक जीति इंग्लिश वर्ड आपनकर ये स्पेलिंग बी टाइटल क्लियर शेयर है नहीं मतलब कहतु क्लास शेयर है तो हाँ चलते आगे जावा. नेक्स्ट देखिबा भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट रे लोकेटेड? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्टेट ना होची महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. न्यूज रे कोन पई थिला बिकॉज़ गोटे सर्वे एस्टिमेट करिछि इंडियन जायंट स्क्वारल माने आपनकर भीमशंकर वाइल्ड लाइफ आपनकर ये सॉरी भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर इंडियन जायंट स्क्वारल मानकर पॉपुलेशन एस्टिमेशन करबा आरंभ करा हिछि हैला. दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. नेक्स्ट देखिबा इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर तांकर डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? डेट आउची मे 29 इज द करेक्ट आंसर हैला. हां आ ए वर्ष थीम होची इन्वेस्ट इन पीस. ए वर्ष थीम होची इन्वेस्ट इन पीस. ओके जिबा आगु बढ़िबा. नेक्स्ट कहूची व्हिच फोक आर्टिस्ट रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड 2026 फॉर द प्रिजर्विंग अल्गोजा म्यूजिक? अल्गोजा म्यूजिक पई पद्मश्री अवार्ड किए पाइछन्ती? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अल्गोजा म्यूजिक पई पद्मश्री अवार्ड किए पाइछन्ती आपनकर? तागाराम भिल आपनकर अल्गोजा अवार्ड पाइछन्ती. नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स टू स्ट्रेंथन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करिया पई आपनकर मते कोंतु को स्कीम ता रिसेंटली अप्रूव कराइछि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा? तो आंसर होला सार्थक स्कीम. सार्थक स्कीम रो फुल फॉर्म होची स्कीम फॉर असिस्टेंस इन रेशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विथ ऑटोमेशन इन पीडीएस. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को केमिति ऑटोमेशन आडू को निया जिवो ता ऊपर काम करा होची हला. जिबा आगु बढ़िबा ओडिसा रा एग्रीकल्चर सेक्टर एवडा टिके अलग अलग वेरिएबल में देखिबा. ओडिसा रा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ है केते 5.3%. ओके जोटा कि नेशनल एवरेज 3.1% दिया है. आईपीएस ऑफिसर अनन्या अवस्थी नाटा सुनि नियंतु. नाटा कोन अनन्या अवस्थी हला. एडीडी कैंप कहा को बनिचंती? गवर्नर ऑफ ओडिशा को बनिचंती. द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन. हां पारादीप पोर्ट अथॉरिटी इंडिया रा टॉप परफॉर्मर इन द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रे. पारादीप पोर्ट कथा मु कहूची ओडिसा रा कंटेंट में मु कहितली थिबो बोली अछि न नाही. हां इंडिया रा टॉप परफॉर्मर इन द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर एफवाई 2024 एंड 2025 हला. तापर हम देखिबा ओडिशा टू सेंड स्किल्ड वर्कर टू रोमानिया फॉलोइंग कम्युनिकेशन फ्रॉम इंडियन एम्बेसडर टू रोमानिया. सरन दरकार नै. ओडिशा गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस एआई इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम. ओडिशा गवर्नमेंट एआई इंटीग्रेटेड एग्जाम सिस्टम को इंटीग्रेट करिया को जाउछ जिंस रे हां टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन इन रेस्पॉन्स टू कंसर्न्स ओवर क्वेश्चन पेपर लीक्स एंड डेवलप इट्स ओन ओडिशा इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ओके चलंतु तो डिफेंस सेक्रेटरी नाटा सुनि नियंतु. डिफेंस सेक्रेटरी नाटा कोन? राजेश कुमार सिंह गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डीआरडीओ चेयरमैन. तो डीआरडीओ रो एडिशनल चेयरमैन पोजीशन के नेला राजेश कुमार सिंह नेले हला. यूनियन डिफेंस मिनिस्टर नौसेना शौर्य वाटिका आपनकर गोटे ओपन एयर नाval म्यूजियम लखनऊ रे आपनकर इनॉग्रेट करछन्ती. वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला. कोन हला दुख प्रकाश कर स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड रिसेंटली गॉट पारादीप पोर्ट. ओके राजेश कुमार सिंह वेरी वेरी इंपोर्टेंट. परीक्षा आसीबार चांसेस 99% चांस अछि कि डीआरडीओ रो चेयरमैन के हेले. तो आपनकर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट करछन नौसेना शौर्य वाटिका एंड ओपन एयर नाval म्यूजियम इन लखनऊ. ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ which state become the first in India to launch a dedicated senior citizens welfare department? What is the correct answer? Which state become the first in India to launch a dedicated senior citizens welfare department? तो आंसर कोन हला आपनकर तो आंसर कोन हला केरला इज द करेक्ट आंसर. केरला में आपनकर सीनियर सिटीजन मानक पई डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट गोटे बनला. डिपार्टमेंट ही बने देला आपनकर. ओके ठीक अच्छे.
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची वेयर वाज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्राटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून नेम्ड विस्टा लॉन्च्ड मते कोन तो कोठी इंडिया रो प्रथम इंडिजिनस स्ट्राटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा को लॉन्च करा आइछि आंध्र प्रदेश रे करा आइछि हला आंध्र प्रदेश रे करा आइछि ध्यान देखिबा वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल 2026 हेल्ड हला मते कोन तो आपनकर कोठी नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रो देखिया मिली छि तो ध्यान संगला न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर Okay, New Delhi is the correct answer. Next question देखिबा which Indian woman won the silver medal in the mobile application development at the Taipei Capital Cup 2026 Taipei Capital Cup 2026 आपनकर किए सिल्वर मेडल जितन मते कोन तो आंसर संगला आपनकर अर्जुन सुमथी भी आपनकर विजय भास्कर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा which organization launched the unclaimed asset portal which organization unclaimed asset portal को किए आपनकर लॉन्च करे मते को ये भाई कर परबे आरबीआई कर परबे आरबीआई पैकेट अछि आपनकर कोन अछि हला उद्गम पोर्टल आपन जानि छथि उद्गम पोर्टल आपन को कहि बितले आगरु नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची टिके स्पीड हेले मते कहिबे हला टिके स्पीड हेले मते कहि देबे आपन माने which organization developed the AI enabled centralized public grievance redress and monitoring system CPGRAMS chatbot named Samadhan Didi what is the correct answer blurry okay which organization developed the AI enabled centralized आपनकर CPGRAMS chatbot named Samadhan Didi तो ध्यान रखना Department of Administrative Reform and Public Grievances is the correct answer Department of Administrative Reforms and Public Grievances is the correct answer next question देखिबा next question कहूछ आपनकर ऑपरेशन चक्रव्यूह वाज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन आपनकर पाखर उत्तर देखिया मिलुनी क्लास को लाइक हेनी साथ को शेयर करनांती स्टेटस रे पके नांती धन्य है तुम माने धन्य धन्य तमे धन्य तमर कंट्रीब्यूशन क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद से तुम हला कोटिए धन्यवाद नियो सेतर गोटे रखी बाकी त कोन तो फेरे दियो नेक्स्ट ध्यान संग डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हला डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची नौसेना शौर्य बाटिका बेटिका अगर हम पढ़ी आपनकर एटा ओपन एयर नावल म्यूजियम हाँ आपनकर इंटरप्रिटेशन सेंटर इनागुरेटेड इन वी सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश तो ध्यान संगला लखनऊ इज द करेक्ट आंसर कौन है लखनऊ इज द करेक्ट आंसर हाँ एति तो आपन समस्त जानिले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट कहूची व्हाट इज किल स्विच मैकेनिज्म आपनकर that was recently mentioned in news kill switch mechanism आपनकर कोन मते कहि जंतु हे ब्लर होची बेसी टिके ब्लर होची की ओके तो किल स्विच मेकानिज्म कहले कोन किल स्विच मेकानिज्म कहले इमरजेंसी पेमेंट ब्लॉक सिस्टम ओके इमरजेंसी पेमेंट ब्लॉक सिस्टम तुम डिवाइस तुम अकाउंट तुम सर्विस इमीडिएटली डिसेबल कर दबो किछि प्रॉब्लम होला माने किछि प्रॉब्लम होला इमीडिएटली डिसेबल कर दबो आपन जिबा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड ट्रॉमा केयर एज ए पार्ट ऑफ व्हिच फंडामेंटल राइट ट्रॉमा केयर को फंडामेंटल राइट अंडर एमितिया हला माने कोन आर्टिकल 21 ही हबो हंगे मत को एटा आपनकर एमितिया आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर ट्रॉमा केयर को आर्टिकल 21 अंडर कवर कर सुप्रीम कोर्ट यू ऑल नो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पोर्टल फॉर द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ए पोर्टल फॉर द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी भी आपन जो पोर्टल बनाई तो कहउची डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इज द करेक्ट आंसर ओके तो डीआरपीजी लॉन्च करची पोर्टल नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2025 में ओके व्हिच स्टेट और यूटी इज द होस्ट ऑफ 4th लैवेंडर फेस्टिवल 2026 व्हाट इज द करेक्ट आंसर को स्टेट और यूटी आपन होस्ट करची 4th लैवेंडर फेस्टिवल को आपन तो आंसर कोन गला जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर हला जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द इंडिया's टोटल फर्टिलिटी रेट इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 एनएफएचएस रो 6 रे मते कोन इंडिया रा रैंक केते इंडिया रा रैंक माने फर्टिलिटी रेट केते एटा आगला 2.0 इंडिया रा फर्टिलिटी रेट केते 2.0 जदि हम 2.1 करि थांते ताले हम इक्वल कोन करथन रिप्लेसमेंट कर पारथन बट विथ 2.0 वी आर गोइंग टू डिक्लाइन आवर पॉपुलेशन ठीक अछि हम पॉपुलेशन डिक्लाइन हे चलिबो कमी चलिबो लोक माने हला आमे दुई हमर दुई लोक करूना आमे दुई हमर एक स्वामी स्त्री मिसी गोटे छुआ जन्म कले तो स्वामी स्त्री मला पर ताको कंपेनसेट कराउ के नहांती
है कंपेनसेसन माने पैसा कंपेनसेसन नुह दुनिया दुईटा लोक गले दुईटा लोक थिबा कथा दुनिया एग्जांपल कहूचे जो दुईटा लोक गले गोटे लोक बंची पुणी से आउ झील को बाहर करदे तुम कह सर आउ झील को बाहर अरे से झील गोटे कहा तो पुणी झील होइतबो कि नहीं हाँ से परिवार काउंट हो बाहर है शाशुघर भाभी दिखती झील हूँ आमर तुमर कौड़ा है भाई जी जो जन्म होई से सी है तुम कौन कर गोटे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आगे बढ़ुच बाकी तो कुछ आईचु माने तो आम जहाँ कहू तू से करू है आईचु माने तो कम हो रोसे करवा तो कम हो घर कम करवा हाँ चल आगे बढ़िया इंडिया फास्ट स्काईकास्ट सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट व्हिच एयरपोर्ट है इंडिया फास्ट स्काईकास्ट सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट व्हिच एयरपोर्ट तो आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी ए साइड अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमीज व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओके व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो ये आंसर कौन जीव कहूँ मत 50 इज द करेक्ट आंसर नहीं देखिए व्हिच इंडियन वाज ऑनर्ड एज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सॉइल फार्मर हीरो इन मे 2026 व्हाट इज द करेक्ट आंसर मत कहूँ सॉइल फार्मर हीरो क्या डिक्लेयर कर वैल्यू 1 ओके एफएओ सॉइल फार्मर हीरो क्या डिक्लेयर कर वैल्यू 1 को डिक्लेयर कर ओके वैल्यू 1 को डिक्लेयर कर आगू बढ़िया नेक्स्ट पीएम स्वनिधि स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री पीएम स्वनिधि स्कीम को किए इम्प्लीमेंट करिए किए पीएम स्वनिधि स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री होची मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर Beaufort Castle that was recently seen in news is located in which country Beaufort Castle that was recently seen in news is located in which country तो answer है Lebanon is the correct answer among the ongoing West Asia conflict Israel recently pushed deeper into Lebanon and captured the historic Beaufort Castle बहुत बुद्धि को बस ये कौन कला इजराइल अपन कैप्चर ही करना नेक्स्ट देखिए which country is the host of 13th BRICS Urbanization Forum 13 नंबर ब्रिक्स अर्बानाइजेशन फोरम का को कंट्री होस्ट कर मत कहतु इंडिया इज द करेक्ट आंसर 13th ब्रिक्स अर्बानाइजेशन फोरम विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली ऑन 11-12 जून 2026 अंडर इंडिया ब्रिक्स चेयरमैनशिप एतर ब्रिक्स समिट को किए चेयरमैनशिप कर इंडिया कर आसवा व्हाट इज द थीम ऑफ द 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मत कहतु थीम कौन अपन योगा फॉर हेल्दी एजिंग योगा फॉर हेल्दी एजिंग इज द 12th इंटरनेशनल योगा डे रो थीम आपनकर हां नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन रहिला नेक्स्ट गला आपनकर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओके पचला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मेडल टैली एट द 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो आंसर वाला सेकंड इज द करेक्ट आंसर टॉप रे चाइना सेकंड रे इंडिया थर्ड रे जापान फोर्थ रे आपनकर ओके यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फिफ्थ रे कतर आपनकर पळे आसले क्वेश्चन कोन थिला आपनकर 22 नंबर एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे इंडिया रैंक केते सेकंड टोटल मेडल हम केते जितछंती आपनकर 19 टा मेडल जितछंती गोल्ड केते आपनकर 10 टी हम एठी गोल्ड जितछंती नेक्स्ट देखिबा सुमन कल्याणपुर आपनकर हु रिसेंटली पास्ड अवे एसोसिएटेड विथ which field ओबिचुरी क्वेश्चन आपनकर सुमन कल्याणपुर आपनकर सिंगिंग संगे एसोसिएटेड रेनाउंड प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर रिसेंटली पास्ड अवे at her residence in Mumbai at the age of 89 से तांको कंट्रीब्यूशन हिंदी मराठी सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेज को तांकर गीत देइछंती तांको ना हो कोन आपनकर देखन सुमन कल्याणपुर ओके राइट हां चलो आगु को देखिए नेक्स्ट देखिए who has been appointed as the new director general of the police of Uttar Pradesh what is the correct answer who has been appointed as the new director general of police of Uttar Pradesh DGP of UP अपनकर किए नुआ हेले राजीव कृष्णा इज द करेक्ट आंसर किए राजीव कृष्णा इज द करेक्ट आंसर ऑपरेशन शेरुवाली is a multi agency counter terrorism operation conducted by which state or UT ऑपरेशन शेरुवाली आपनकर को स्टेट और UT बनै छै आपनकर आंध्र जम्मू एंड कश्मीर अरे एमितिया जिनस के बनेबो राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर आपनकर आर्मी हमने करछन ऑपरेशन शेरुवाली हला आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर प्रश्न पचलला व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर won the Singapore Open 2026 मेंस डबल टाइटल सिंगापुर ओपन मेंस डबल टाइटल आपनकर के जितन मत कोंदो तो आंसर कन आपनकर सात्विक राज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी
सात्विक राज रानी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मेत्तूर डैम आपनकर रिसेंटली न्यूज रे थिला लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। मेत्तूर डैम रिसेंटली न्यूज रे थिला आपनकर तमिलनाडु रे लोकेटेड। कोन पय न्यूज रे थिला द ओपनिंग ऑफ मेत्तूर डैम ऑन द शेड्यूल्ड डेट may be delayed due to poor water storage and forecast of a weak southwest monsoon of this year। मेत्तूर डैम रा आपनकर जो ओपनिंग करियार थिला गेट ओपनिंग करियार थिला ताको डिले करा जाई पारे। नेशनल सीड रिजर्व ऑपरेट्स अंडर व्हिच अम्ब्रेला स्कीम। नेशनल सीड रिजर्व आपनकर को स्कीम अंडर आपनकर करा होची कृष्णनती योजना अंडर को कवर करा होची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा घेपन लेक रिसेंटली न्यूज रे थिला ये को स्टेट रे अछि। घेपन लेक आपनकर कोठी अछि हिमाचल प्रदेश रे अछि। रैपिड मेल्टिंग ऑफ घेपन ग्लेशियर इज posing a threat to Sisu village। ओके तो घेपन लेक also called as घेपांग घाट ग्लेशियर लेक लोकेटेड कोठी हिमाचल प्रदेश रे हला। घेपन लेक आपण जानिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहू छै वर्ल्ड मिल्क डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए जून 1 रे करा जाए। वर्ल्ड मिल्क डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए जून 1 रे करा जाए। तो वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर on June 1 and the day was established in 2001 by the Food and Agriculture Organization। okay it highlights the importance of the dairy sector nutrition। आ कोन पडिबा महावाटर मिशन कोन कहला महावाटर मिशन was launched by which ministry। what is the correct answer। उत्तर समस्तंकर दरकार एवरीवन उत्तर मते समस्तंकर दरकार। महावाटर मिशन आपनकर लॉन्च हेची को मिनिस्ट्री द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ओके कौन पाई महावाटर मिशन कराई टू प्रमोट इनोवेशन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन द वाटर सेक्टर हला। वाटर सेक्टर में केमती प्रमोट कर परिबे जिंस को। प्रोजेक्ट उदयक इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट उदयक आपनकर कहार गोटे इनिशिएटिव मते कहि दियो देखा के जन आंसर ठीक कहउछन। प्रोजेक्ट उदयक आपनकर होउची बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपनकर जेंति कि प्रोजेक्ट आपनकर में कौन देखी मत कहले दंतक देखी है आहरी प्रोजेक्ट आपंकर बीआर बनाऊँ बहुत गुड़े बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ। बाकी 37th रेजिंग डे आपंकर प्रोजेक्ट उदयक आप देखा मिली जोटि कि केमी प्रोग्रेस को बढ़ा जापर उदयक अंडर रे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि आपंकर फार ईस्टर्न रीजन फोकस करा। नेक्स्ट देखिबा हाँ कदमपराई पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कदमपराई पंप storage hydro power plant is located in which state। तो आंसर होला तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। कोने गला तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर कोने गला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। जानि परले नहीं कार किसी कन्फ्यूजन रहा जानी पाले तो द रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। मत कहि दियंतु रुद्रम 2 एयर टू एयर आपन का मिसाइल जोडा रहउची या को किए बनेछि डीआरडीओ बनेछि हला डीआरडीओ बनेछि। व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च मिशन आपन का सोनेजुरी। ओके सेनेजुरी जेमती प्रोनाउंसिएशन करेंगे को मिनिस्ट्री करिछि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर मिनिस्ट्री करिछि हला। कोन पई करिछि आपन देखो टू ट्रांसफॉर्म आसाम्स मुगा सिल्क सेक्टर इनटू ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम हला। आसाम रे पर्टिकुलर फील्ड को केमिति बेटर वे रे ताकू कोन करा जइबो ग्रोथ करा जाई परिबो ता पई। नेक्स्ट देखिबा हस्तकला सेतु योजना एहर मु कहूछि कोन जिनसटा हस्तकला सेतु योजना was launched by which state government। को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च कराई हस्तकला सेतु योजना। तो स्टेट ना कोन हला गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। कोन पय करा होतला टू स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इंप्रूव मार्केट एक्सेस फॉर आर्टिसंस हला। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द न्यू बेस ईयर ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई रो न्यू बेस ईयर कोटा मो गारंटी दे कि कहू जे प्रश्न परीक्षा आपन आसी परिबो हला। तो आंसर कोन हला आपनकर 2022-23 इज द करेक्ट आंसर। कोन हला 2022-23 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द गुजरात पुलिस अगेंस्ट मेल अकाउंट साइबर फ्रॉड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय गुजरात पुलिस अगेंस्ट म्यूल अकाउंट साइबर फ्रॉड। तो आंसर हला आपनकर ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 हला। ए म्यूल अकाउंट को लेके आपनकर परीक्षा प्रश्न भी आसीथिला जो मान जानि नांदी हला। एथर ओसीएस मेंस रे म्यूल अकाउंट को लेके प्रश्न आसीथिला ठीक अछि।
तो ऑपरेशन म्यूलेंट इज बीइंग कंडक्टेड ऑन साइबर सेंटर एक्सलेंस विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुलिस कमिश्नर साइबर पुलिस स्टेशंस एंड क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स ओके तो एटा आपनकर कोन काम होची कि म्यूल अकाउंट गोटे कोन देखंतु एटार क्वेश्चन हो एटा बुझतले बहुत पिला आंसर कर दैथांते म्यूल अकाउंट इज ए हां बैंक अकाउंट used by cyber criminal to receive transfer and launder fraudulent money while the account holder is known as a money mule okay account holder को money mule कहा होची mule account कहले धरिना मु कुछ गोटे पैसा फेक रे गोटे जगह रे उठो 5 लाख टका मो अकाउंट को नहीं परिबिनी मु कोन करबी म्यूल अकाउंट को नेबी म्यूल अकाउंट रो काम से मु होची कोन आपनकर हां मु होची आपनकर कोन म्यूल मनी म्यूल मते कहा हो मु जदी पैसा उठेली मते मनी म्यूल कहा जिवो उल्टाटा बुझी पाले तो म्यूलेंट ओके हाँ नेक्स्ट देखिए which Indian teacher won the global Cambridge dedicated teacher award 2026 which Indian teacher won the global Cambridge dedicated teacher award 2026 तो ध्यान रखना सोमा मंडल is the correct answer okay सोमा मंडल is the correct answer तो सोमा मंडल from GD Goenka public school won the global Cambridge dedicated teacher award 2026 she became the first Indian teacher to win the overall global title after securing 40% of the public vote among regional winners worldwide सोमा मंडल आपनकर ग्लोबल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड रो एठी अवार्ड को जीति चंती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची व्हिच इंडियन टीम रिसेंटली वोन द अर्थ प्राइज 2026 व्हिच इंडियन टीम आपनकर अर्थ प्राइज जीति मते कहि दियंतु देखिया केन आंसर ठीक कहउचंदी हां रूबल नगी पाइतले बेस्ट टीचर तो ध्यान रखना वाला विवन चौबचरिया आर्यन अग्रवाल एंड अवन्या मेहता ओके नेक्स्ट देखिबा विवन आर्यन एंड अवन्या बढ़िया कथा है अभिजीत बराड़ आंसर सब दे देले व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मेसो एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर एमएसएमएस मिशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सी कौन बने जंदी मते कहंतु बने जदी प्रोजेक्ट शिकार बने चंती हला प्रोजेक्ट शिकार बने चंती कौन पई एमएसएमई मानन को डिजिटल बिजनेस रे केमिति पब्लिक लिस्टेड कंपनी बना जाय परिबो हला डिजिटल बिजनेस रे एमएसएमई मानन को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मानन को केमिति बना जाय परिबो आपनकर लिस्टेड कंपनी केमिति बना जाय परिबो शेयर मार्केट रे समान केमिति ओल्हेई परिबे हला ओके ठीक अछि डन 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 वर्ल्ड बाइसाइकिल डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय वर्ल्ड बाइसाइकिल डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय जून 3 रे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व करा जाय ए वर्ष थीम कोन साइक्लिंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर ए वर्ष थीम कोन साइक्लिंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर नेक्स्ट देखिबा द संग्रिला डायलॉग also known as the Asia Security Summit is held annually in which country the Shangri-La dialogue also known as the Asia Security Summit is held annually in which country तो आंसर करना Singapore is the correct answer okay Singapore is the correct answer India has officially signed a deal to supply a BrahMos missile to Vietnam during the Shangri-La dialogue held in Singapore okay ठीक है जीवा the Shangri-La dialogue also known as the Asia Security Summit is regarded as the Asia's premier defense and security forum next asiba according to prison statistic report which state or UT recorded the highest prison occupancy rate in 2026 सब अधिका जेल रे को मान रहछन मते कोन को स्टेट रे जेल अधिका अछंती दिल्ली इज द करेक्ट आंसर दिल्ली सब अधिका आपन जेल देखिया मिलछन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हला नेक्स्ट व्हिच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 व्हाट इज द करेक्ट आंसर व्हिच इंडियन सिटी होस्ट ऑफ सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग आंसर गला वाराणसी इज द करेक्ट आंसर कोन गला वाराणसी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स प्रति वर्ष आपनकर जून 1 रे ऑब्जर्व करा जाय आपण समस्त जानि चंदी जून 1 रे करा जाय हां आपनकर एई वर्ष थीम कोन टुगेदर फॉर पेरेंट्स हला टुगेदर फॉर पेरेंट्स बट सेते बेले जाय जेते लागे पेरेंट्स पण सेई बेले जिंस को नेउथिबे पेरेंट्स तांको हिसार जिंस नेले टुगेदर तो हमें रहिबा टुगेदरनेस आसी परिबन हां कि नै गोटे घर थिबा किंतु गोटे घर रो फील ही आसी पार नथिबो सेंदे बहुत पिला मानक संगे होउछ बहुत पेरेंट्स मानक संगे होउछ बट दिस इज इट कोन करा जाय परिबो है बहुत पैसा थिले असुविधा बहुत पैसा नथिले असुविधा है पैसा स्ट्रगल करुले असुविधा सब जिनसर ये अच्छी मेन कथा हूँ कि जो बापा माँ मैंने
ताल मिलेकी चली पारिचंती सिस्टम सहित सोसाइटी सहित से माने ही खुशी अच्छी कोट ना कोटी दुख नल प्रकाश कर आम पिला एमती होता आम छुआ एमती होता गोटे एक्सपेक्टेशन रही जाऊँगी से बापा माँ मान पाखर जो बापा माँ मैंने आजिका समय देखुना कि ग्लोबल सिनारियो कि सराउंडिंग सिनारियो कौन रोचे चलते आगे देखा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट इंडिया ओवरटुक which country to become the world's second largest solar market in 2025 what is the correct answer According to recent report, India overtook which country to become the world's second largest solar market in 2025? So United States is the correct answer. Okay, United States is the correct answer. India second re. Hala, India second re. Tapara agu badiba. Which university has become India's first private university to establish an India AI data lab? What is the correct answer? Which university has become India's first private university to establish an India AI data lab? So the answer is Chandigarh University is the correct answer. Chandigarh University is the correct answer. Next देखिए which state government has launched the पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना को स्टेट गवर्नमेंट आपन लॉन्च करिछि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर आपन महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर ओके आपन फार्मर्स मान को लोन रिलीफ दवा पई एटा गोटे आपन सिस्टम नै के आछन पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना नै के आछन देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच इनिशिएटिव ऑफ आंध्र प्रदेश वोन 2026 फूड प्लानेट प्राइज 2026 फूड प्लानेट प्राइज आपनकर कोई जो आंध्र प्रदेश इनिशिएटिव के आपनकर को किए आनी मते कोंत हला तो आंसर कोन आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजी रो 81 नंबर आपनकर मते कोंतु किए मत प्रेसिडेंट किए मत कहतु है तो आंसर कौन है आपनकर खलीलुर रहमान इज द करेक्ट आंसर खलीलुर रहमान इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हलमा इज अ ट्रेडिशनल कलेक्टिव लेबर प्रैक्टिस एसोसिएटेड विथ व्हिच ट्राइबल कम्युनिटी हलमा गोटे ट्रेडिशनल कलेक्टिव लेबर प्रैक्टिस एसोसिएटेड विथ व्हिच ट्राइबल कम्युनिटी तो आंसर कौन है भील ट्राइबल कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर भील ट्राइबल कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए Karnala Fort that was recently seen in news is located in which state? Karnala Fort आपन को state located Maharashtra is the correct answer हला तो deforestation बड़ी चलछि हला deforestation बड़ी चलछि आपनकर more than 60 hectare of the land near Karnala Fort in Maharashtra without prior approval of the union government सरकार ठू परमिशन न नै कि गछ काटते जाओ नेक्स्ट देखिबा इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन is observed annually on which day? International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed annually on which day? तो आंसर है जून 4 is the correct answer. कौन है गला जून 4 is the correct answer. Right? Next देखिए who edited the book when audit matters CAG interventions that made a difference? तो कौन देखिए लिखी who edited the book when audit matters CAG intervention that made a difference? तो लिखिछन के विनोद राय इज द करेक्ट आंसर के विनोद राय इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची मेत्ते फ्रेडरिक्सन हैज बीन अपॉइंटेड री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री मतलब को कंट्री प्राइम मिनिस्टर एटी आपन इलेक्ट होइछन तो कंट्री ना कोन आपन करैला डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर कोन हैला डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर मेत्ते फ्रेडरिक्सन आपन डेनमार्क रो नुआ आपन री-इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनिचंदी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए जीन साइलेंसिंग नैनो मेडिसिन व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए जीन साइलेंसिंग नैनो मेडिसिन प्लेटफॉर्म फॉर टारगेटेड ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट पे आपनकर टारगेटेड जीन साइलेंसिंग माने जीन को साइलेंस कर दबा जीन एडिटिंग जीन कटिंग बहुत गुड जिंस ता भीतर गले बहुत समय लागिवो बट आपनकर मते कोन जोडी आंसर करबे आंसर हला अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे इज द करेक्ट आंसर अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs across India व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs across India तो आंसर हला PM सेतु इज द करेक्ट आंसर कोन हला PM सेतु इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE रो नवा चेयरपर्सन के मते कोंतु लोखंडे प्रशांत सीताराम ओके
लोकमान्य प्रसाद सीताराम आपको सीबीएसई गोटे बड़ मुद्दा होता मन अच्छे मन नहीं सीबीएसई गोटे बहुत बड़ा मुद्दा होता घोटाला मुद्दा होता तो ताकू नहीं नुआ देखा मिले as per the logistic sport performance index as per the logistic sports performance index which sport of the dry bulk cargo category handling more than 5 million ton already mu पढ़ी सारे एटा आपण मानको कह दियो तो कौन हो पारादीप पोर्ट इज द करेक्ट आंसर Paradip Port is the correct answer. Project Debug is an initiative of which organization? Project Debug कहार गोटे इनिशिएटिव मत कहि दोन तो आंसर कला आपनकर गूगल इज द करेक्ट आंसर. गूगल बायोटेक्नोलॉजी आपनकर प्रोजेक्ट डीबग नै के आछि जहा द्वारा कि मशा मान को स्टेरिलाइज करा हबो हला मशा मान को स्टेरिलाइज करा हबो राइट. चलो तो आगु बुझिबा और ठीक अछि मशा मान प्रोजेक्ट डीबग ना जेमति काम सेमति न हो हला. चलो तो which Indian player recently become the youngest Indian to win a world table tennis feeder women single title? Question to answer कौन होगा which Indian player recently become the youngest Indian to win world table tennis feeder women single title तो answer कौन होगा मतलब कौन तो दिव्यांशी भौमिक is the correct answer. Okay दिव्यांशी भौमिक is the correct answer. Next देखिए जल संचय जन भागीदारी initiative is implemented by which ministry? जल संचय जन भागीदारी आपनकर कहा द्वारा इंप्लीमेंट कराई मते कहंतु मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द करेक्ट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द करेक्ट आंसर हला. नेक्स्ट देखिबा तो AGM 114 हेलफायर मिसाइल AGM 114 हेलफायर मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कौन ला उत्तर देखा जाउनी कोडे गलो सब तो आंसर कौन ला आपनकर यूनाइटेड स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर. अमेरिका इज द करेक्ट आंसर. US military use hellfire missile आपनकर अगेंस्ट टैंकर हेडिंग टुवर्ड्स ईरान. ओके विरूपाक्षा टेंपल कथा कहूँ विरूपाक्षा टेंपल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विरूपाक्षा टेंपल आपनकर कोडी लोकेटेड मत कहि दियौ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके विरूपाक्षा टेंपल आपनकर कोडी लोकेटेड लोकेशन होछ कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर. ओके कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर. कोन है रिसेंटली एसआई आपनकर रिमूव करछु वॉल्स बिल्ट इनसाइड द मेन गोपुरम इन द विरूपाक्षा टेंपल एट हम्पी. नेक्स्ट होची which city hosted the first yogasan championship? World yogasan championship को सिटी अपन प्रथम होस्ट करछ मते कोन तो अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा which Indian boxer recently become the world's number 1 in the women 57 kg category in the latest world boxing ranking? Which Indian boxer recently become world number 1 in the women's 57 kg category in the latest world boxing ranking? तो आंसर कन आपनकर जस्मिन लैम्बोरिया इज द करेक्ट आंसर. जस्मिन लैम्बोरिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which organization has unveiled the fair water AI data center? Which organization has unveiled the fair water AI data center, a sustainable AI infrastructure project? What is the correct answer? तो आंसर है Microsoft is the correct answer. Okay Microsoft is the correct answer and Mount Pleasant. Okay AI data center Mount Pleasant अपन को देखिया को मिली the Tana Bhagat community is primarily found in which state? ताना भगत कम्युनिटी आपनकर को स्टेट देखा मिले मते कोन तो स्टेट ना हो झारखंड इज द करेक्ट आंसर हला. झारखंड इज द करेक्ट आंसर. ताना भगत कम्युनिटी झारखंड रे आपनकर हाईवे एक्सपेंशन को अपोज करछंती काहे कि हाईवे होछ हाईवे एक्सपेंशन को अपोज करछन ताना भगत कम्युनिटी आपनकर को जगह आपनकर झारखंड रे आपण देखिले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बाल्टॉप्स 2026 एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन व्हिच सिटी? बाल्टॉप्स एक्सरसाइज 2026 इज कंडक्टेड इन व्हिच सिटी तो आंसर कला बाल्टिक सी इज द करेक्ट आंसर हला. Baltic Sea is the correct answer. Next देखिबा the carry me back policy has been launched at which आपनकर pilgrimage site? The carry me back policy has been launched at which pilgrimage site? Badrinath, Amarnath, Kedarnath and Vaishno Devi. Hello. The carry me back policy has been launched at which pilgrimage site? तो ध्यान संगला Kedarnath is the correct answer. Carry me back policy कहले कोन ओलिया पकोचो मते नै कि जाओ हाँ कि नहीं. नेक्स्ट देखिबा which city has been selected to the host Andhra Pradesh first India semiconductor mission project? हला मते कोन तो को सिटी हो आपनकर सिलेक्ट होच होस्ट करे पई जिंस को नै कि हला. तो आंसर कण गेला आपनकर विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर. अच्छा ऑफिस पई पूर्णिमा कहले म रहिली ऑफिस बाहरलो वर्षा होची केमदी कोन ऑफिस जाउछो? ओके चल आगु देखिबा फोटुला पास दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ द यूटी? फोटुला पास आपनकर को स्टेट ऑफ यूटी लोकेटेड मते कहि जन तो स्टेट टा हो कोन लद्दाख इज द करेक्ट आंसर.
फुटुला पास लद्दाख रे आपन देखिया मिलुची हला तो फुटुला पास टनल ऑन द नेशनल हाईवे 1 इन लद्दाख हैज बीन अप्रूव्ड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1196 कोटी टका पाखापाखि 1200 कोटी टका आपन फुटुला पास देखिया मिलिबो नेक्स्ट देखिबा द रिसेंटली कंक्लूडेड मावेन मिशन ऑफ नासा वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच प्लैनेट The recently concluded Maven mission of NASA was associated with which planet? So the answer is Mars is the correct answer. Okay, Mars is the correct answer. Next देखिबा Penner river that was recently seen in news originate from which hill range? Penner river को hill range रो originate ହେଇଛି आपनकर ହେଇଛି कोटी नंदी hill रो originate ହେଇଛି recently Penner river was in news due to extremely low water level पानी चारियाडे सुकी गलानी सॉरी सेदबा समस्त न्यूज रे अछंती नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय गुजरात पुलिस अगेंस्ट बांग्लादेशी नेशनल्स सॉरी What is the name of operation launched by Gujarat Police against Bangladeshis national residing illegally in the state? So the answer is Operation Delta Hunt is the correct answer. कौन है गला? Operation Delta Hunt is the correct answer. Next question देखिए. A giant potato patch coral colony, हला Pavona clavus को house तो has been discovered in which territory? Okay, मतलब कौन तो कोस्ट territory अपन को discover है मतलब कौन तो कौन है जो लाक्षाद्वीप is the correct answer. Okay, लाक्षाद्वीप. World largest potato patch. वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटाटो पैच कोराल कॉलोनी कोड देखिया मिली मते कोंतु हमर लाक्षाद्वीप देखिया मिली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओके व्हिच विलेज हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज अंडर द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम व्हिच विलेजेस हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो आंसर कनला आपनकर चुमुर इज द करेक्ट आंसर कोन गेला चुमुर इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज ए बोली डे What is a Boli day that was recently mentioned in news? Boli day जोटा recently news आतले जिसरा कौन हम पढ़ोंगे meteor, हला meteor suspected Boli day enterly atmosphere माना जाऊँ कि मैं भी meteor टे अपनकर atmosphere को पहुँची गल्लानी हाँ India's 7th regional meteorological center RMC India's 7 number RMC was recently inaugurated at which place? तो ध्यान सकना ला जम्मू एंड करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखिबा जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी 100 रामसर साइट बनिला को स्टेट अछि 69 नंबर शिक्षा झील ओके तो ये आंसर करला उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हां राइट 100 नंबर रामसर साइट गला नेक्स्ट देखिबा द नमो ऑक्सीजन हां द नमो ऑक्सीजन पार्क्स वर इनॉग्रेटेड अंडर व्हिच कैंपेन इन दिल्ली ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नमो ऑक्सीजन आपन कोड कैंपेन को कराई छी एक पेड़ मां के नाम हिसाब से कराई छी हला आपन दिल्ली कराई छी दिल्ली आपन सेम के अछन मते कोंतु सेम अछन रेखा गुप्ता at the same time इंडिया लेवल आपनकर एनवायरनमेंट मिनिस्टर के अछंती भूपेंद्र यादव एनवायरनमेंट मिनिस्टर अछंती हला ओके आल्सो नोन एज यस याकू सुरताल भी कहा जाए मु जदी कहबी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को आपनकर सुरताल भी कहा जाए ठीक अछि जानि पारले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्टर मतलब कोन को मिनिस्टर इनिशिएटिव पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आपनकर को मिनिस्ट्री रो गोटे आपनकर इनिशिएटिव तो टारला मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज द करेक्ट आंसर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स हैज won गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 नेक्स्ट देखिबा व्हिच सिटी इज होम टू फर्स्ट इंडियन ब्रांच कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल व्हिच सिटी इज होम टू फर्स्ट इंडियन ब्रांच कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल तो आंसर करला आपनकर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर ओके Bangalore is the correct answer. Next देखिए what is the name of the initiative jointly launched by India and UK to monitor and analyze critical mineral supply chain? Critical mineral supply chain को मैनेज करया पाए अच्छा critical mineral supply chain को मैनेज करया पाए आपनकर पैक सिलिका भी आस्तला मने पडुची ना पैक सिलिका हां तो थाडम तो से तो स्टोरी अलगा थिला बट मते कोन UK इंडिया में से कोन करचंदी GSCO करचंदी हला GSCO ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी हला ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO माने ठीक अच्छे इनिशिएटिव फास्ट अनाउंस ड्यूरिंग ए बायलैटरल एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके रो आपनकर प्राइम मिनिस्टर के अछंदी कीर स्टामर अछंदी कीर स्टामर कर समय सरी आसलानी नुआ प्राइम मिनिस्टर यूके होबाक जाउछंती त आसी जिवे मु तुमको जणाई देबी नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल इंडिया रो प्रथम फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल आपनकर के नै के आछि मारुति सुजुकी
ओके भाई पूरा E100 पागल आईगले लोक E24 को नहीं E100 कर सारे मैंने जदि के E20 को ब्लेम कला देन ही और सी इज एन एंटी नेशनल ही और सी इज ए एंटी नेशनल भाई देख तुम भाई देख E20 को ब्लेम कर न कर तुम इच्छा हाँ एंटी नेशनल हम न हम तुम इच्छा किए कौच आम देश में पानी ना बोली से नहीं एंटी नेशनल कहला हाँ हो कि भी गले कौन एंटी नेशनल एंटी नेशनल ओके चलो भाई जब मुड है मुड़े कुआड़े कुआड़े कौ कौ जगार पशिज ठिकाना नहीं किसी हाँ जी आगे बढ़िया नितिन गडकरी कौन तो हाँ हाँ which organization recently launched the digital onboarding platform Star NPS to the national pension system? Which organization recently launched the digital onboarding platform Star NPS for the national pension system? तो ध्यान से कहना अपना करो PFRDA is the correct answer. Okay, PFRDA is the correct answer. Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA. Okay, next देखिए recently which Indian Army officer won Berer Brooks Award and the General Douglas MacArthur Military Leadership Writing Award in the USA? What is the correct answer? तो ध्यान से कहना अपना मेजर प्रभात मिश्रा is the correct answer. मेजर प्रभात मिश्रा is the correct answer अपना करो. Next देखिए corner seeker भारत who recently announced his retirement is associated with which sports? What is the correct answer? Today आपन क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर. भारत ओके तो आपन क्रिकेट अनाउंसमेंट कर रिटायरमेंट नहीं गले. इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे आपन प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व कराए. इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व कराए. डेट हो आपन जून 5 है हला जून 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 2025-26? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? According to Ministry of Statistics and Program Implementation, what is the India's estimated GDP growth rate for the full financial year 2025-26? तो आंसर कौन है? 7.7% is the correct answer. 7.7% is the correct answer. Next question देखिए the neglected displacement crisis report. The neglected displacement crisis report is published by which organization? What is the correct answer? What is the correct answer? तो आंसर कौन है? Norwegian Refugee Council is the correct answer. Norwegian Refugee Council is the correct answer. World Environment Day is observed every year on which day? World Environment Day प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? World Environment Day प्रति वर्ष जून 5 रे ऑब्जर्व करा जाए. केबे करा जाए? जून 5 रे करा जाए. World Environment Day is observed on June 5 every year. It is led by the United Nations Environment Program and the 2026 theme is inspired by nature for climate for our future. हला जिबा आगु बढ़िबा. ओके नेक्स्ट कोन कहूची द AS400 एयर डिफेंस सिस्टम कथा कोआ होची. AS400 एयर डिफेंस सिस्टम कथा कोआ होची. ये आपनकर को कंट्री डेवलप करिछ? को कंट्री डेवलप करिछ मते कहि दियंतु. एटी आंसर इज आपनकर AS400 रशिया इज द करेक्ट आंसर. मते कोन आपनकर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम किए बनेछि? थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम किए बनेछि मते कोंतु? अमेरिका बनेछि. इंडिया रो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनथान तानाडा कोन? सुदर्शन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया रो बनथान हला. आयरन डोम कहार आपनकर? इजराइल होछ आयरन डोम. आयरन डोम कहार? इजराइल होछ आयरन डोम. क्लियर जे आगु देखिबा. The Nepal observed the day for elimination of the caste discrimination and untouchability on which day? Nepal caste discrimination और untouchability पाई आपनकर डे ऑब्जर्व करछ. डेटा आपनकर केबे जून 4 रे आपनकर हला. नेक्स्ट देखिबा बलविंदर सिंह हला. बलविंदर सिंह मझिरे मझिरे ब्लर होछ. ओके ठीक अछि. बलविंदर सिंह धालीवाल who recently passed away was associated with which sport? तो आंसर कोन गला आपनकर शॉर्ट पुट इज द करेक्ट आंसर. बलविंदर सिंह धालीवाल आपनकर कहा सहित आपनकर हमर कनेक्टेड पास्ट अवे करि गेला आपनकर शॉर्ट पुट सहित. और कथा सुनिने मे बी आपनको ए सेशनटा केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लागू थाई पारे. बट अगेन मु कहूँ कि 1.5 घंटा भीतर आपन कोन 350-400 क्वेश्चन को रिवीजन करि परिबे कि? जदि माइंड सेट अछि ताले आपन क्लास देखंतनी पळै जांतु. पीडीएफ देखि देबे. जदि आपन लागुच नाइ क्लास रे पढिले जिंस कवर हे परिबो ताहाले ही क्लास रे बंतो. मु सब बेले क्लीन रखिछि फॉर्मेट को. इट्स योर चॉइस कि तुमको क्लास देखियार देखना. आ गोटे कथा जेतले जाउचंती चुप करके पळै जिवे. आसीले बड़ पार्टी करके आसीबे. गल्ला बेलू गले कोन हबो? मु जाउछि सर बाय बाय क्लास चलथिबो मु जाउछि. छुआ दिने टा सर छाडुतले क्लास सरला मझिरे लेट रे आसीले माडो आग जिबा कहले माडो होय कि नाही. तेणु गला बेलू को दया करी केटा कहबेनी कि मु जाउछि बोली. चुप करके पळै जिवे हला. चुप करके पळै जिवे. राइट बस आसला लोक सर आसीगले कहबे
राजप्रसाद कहते सर मुझे पास नहीं कि जानी पानी क्लास के जानी पानी एक्चुअली प्रोब्लेम टी होता प्रोब्लेम सॉल्व हो गला नंबर मेसेज कराची है मुझे नंबर दूसरी 6371424292 है आउट 7749948267 नॉले 9668558112 ये तीन ऑफिस नंबर आपंकर मो नंबर भी अच्छे आपंकर 8599848814 मो नंबर बेस रिप्लाई दे पारूनी है तेणु मुझे बेटर कहि कि तीन नंबर को मेसेज कर दियो एक टाइम तीन नंबर को मेसेज कर गोटे रिप्लाई मिले कौन है ओके चलतु नेक्स्ट देखिए तो इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे व्हाट इज द करेक्ट आंसर द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे तो ध्यान से आपनकर जून 5 इज द करेक्ट आंसर है जून 5 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट 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 कोन कहूछ आपनकर देखंतु हां छतु छतु छाड़ हो एवडा दरकार नै आपनकर आसीबा आसीबा आगु ना गुडा सब आसीबो आपनकर आगु ना गुडा आसीबो हां व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू एंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया व्हाट इज द करेक्ट आंसर व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गंगा टू एंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया तो कोई जोटे आंसर कौन बटे आंसर जो यूपी इज द करेक्ट आंसर यूपी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा सैपलिंग साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी कोई जोटे आंसर कौन हो साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप ऑफ इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी तो अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर सैपलिंग The sapling South Asian Policy Leadership of Improved Nutrition and Growth Dialogue 2026 was inaugurated by Union Minister Chirag Paswan in Ahmedabad, Gujarat on June 9, 2026. Hello? Many operators of the day. Okay, चलो आगे बढ़िया. Land Port Management System LPMS विनिमय गोटे LPMS बनीची हला विनिमय कहीं बनीची ताको को ऑर्गेनाइजेशन बनीची मते कहंतु लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कौन किए बनई मत कहतु लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जमी आप एयरपोर्ट लैंड पोर्ट अथॉरिटी आपंकर अच्छे है जी विनिमय कहीं बनई गोटे रिसेंटली 250 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपंकर अप्रूव होती उत्तर प्रदेश कौ सिटी यूपी कौ सिटी आपंकर सीतापुर यूपी कौटी सीतापुर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चरल समिट 2026 ब्रिक्स एग्रीकल्चरल समिट 2026 आपंकर कौ सिटी होस्ट कर कह दिखाँ इंदौर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑल वुमेन सिंगापेन बाय लायनेस स्पेशल फोर्स एटा बढ़िया फिल्मी सिस्टम देखल माने कि तमिलनाडु तमिल विल डू दिस ओके तमिल माने जिनस करिवे तमिल रे जोसेफ विजय द सीएम ओके तो आपन कौन ऑल वुमेन सिंगापेन लायनेस स्पेशल फोर्स ओके देखिए आगु को ऑल वुमेन सिंगापेन आपन केते इफेक्टिवली काम कर परछंती लॉ बनेबा तो मु भी लॉ बनेथिबि किंतु मु लॉ बनला पर मुझे इंप्लीमेंट करि परियो अछि इंप्लीमेंट करि परियो अछि कि नै मते को तमिलनाडु रिसेंटली लॉन्च all women Singaporean special force under the state police department to strengthen the safety and women's children. Next देखिए which institute has developed a framework to generate spin currents using sound waves. Which institute has developed a framework to generate spin currents using sound waves? तो ध्यान से करना INST Mohali is the correct answer. INST Mohali is the correct answer. है तो आपन नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए जून 8 रे हला जून 8 रे आपनकर ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व करा जाए ये कोन एमके स्टाइल फोटो लागी जे ए इग्नोर करो एआई वाला टिके धोखा दे दला एआई टिके धोखा दे दी ताको छाड़ो ना हला छाड़ो ओके चलो इग्नोर करो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वाला नेक्स्ट देखिबा द रिपोर्ट इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन द रिपोर्ट इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नाउ अछि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इज द करेक्ट आंसर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि द ज्ञान भारतम मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री द ज्ञान भारतम मिशन implemented by which ministry thought ministry na gana ministry of culture is the correct answer ministry of culture is the correct answer atal astra yojana was launched by which state government atal astra मिलिबो टिके तो ध्यान से गना गोवा
अटल आश्रा योजना आश्रा कौन मिलिबो घर आश्रा मिलिबो कहा को मिलिबो आपनकर एसटी फैमिलीज मान को मिलिबो चलन आगु देखिबा वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय आपनकर जून 9 रे ऑब्जर्व करा जाय एई वर्ष थीम कोन एक्रीडिटेशन रो इनोवेशन ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी द पावर ऑफ एक्रीडिटेशन ओके तमे जदि जणो को एक्रीडेट कर दला माने कोन ताकू रेटिंग कर दला हम कहि परिबा माने गोटे मूवी को जदि रेटिंग नाही तुम जानव कमी खाइब कमी टोटल रेटिंग नहीं जदि है तो रेटिंग एजेंसी को कहुए एक्रीडिटेशन कहुए कि यही पोजिशनटा यही ऑर्गेनाइजेशन को मिली कि यही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को मिली है तो तेजस मैक 1 इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन तेजस मैक 1 आपनकर को कहा द्वारा डेवलप कराई मते कहि दियंतु तो आंसर कला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर ओके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर हाल The Defense Minister recently reviewed the progress of major HAL project including delays in delivery of the light combat aircraft Tejas Mach 1A. Okay, jiba agu badhiba. What is pyro processing that was recently seen in news? What is pyro processing that was recently seen in news? Pyro processing kon apan kara a process of changing materials using high temperatures. Okay, the pyro processing was recently in news due to its role in the reprocessing spent nuclear fuel in advanced fast reactor programs. Hello, next देखिबा next कहूची according to SIPRI yearbook 2026 what is the rank of India in the global military spending आपन ग्रामे 5 नंबर रैंक रे आछंती जेते कम हम मिलिटरी स्पेंडिंग करिबा हम कंट्री पे सेते भला हम इंडिजिनियसली बिल्ड जनस करथिबा हला काना हम जेते अधिका स्पेंड करिबा गोटे समय आसीबो वी विल नॉट बी इंडिपेंडेंट आमर गोटे मिसाइल दरकार रशिया को कॉल करो आमर गोटे एयरक्राफ्ट दरकार फ्रांस को कॉल करो खाली कॉल तो करूथा लड़िबो केते बेला हां नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 व्हिच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 तो आंसर कौन गेला इंडिया इज द करेक्ट आंसर हला द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 वाज हेल्ड एट एक्का अरेना अहमदाबाद फ्रॉम 4 ରୁ 8 जून 2026 नेक्स्ट देखिबा एक्सरसाइज पीस ब्लैक को कंट्री आपन होस्ट करछ मते कहि दियंतु एक्सरसाइज पीस ब्लैक के करूची ऑस्ट्रेलिया ओके नेक्स्ट देखिबा क्रोन्स डिजीज कोन कहला क्रोन्स डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज प्राइमरीली क्लासिफाइड एज व्हिच टाइप ऑफ डिजीज मते कहि दियंतु क्रोन्स डिजीज आपनकर को टाइप रो डिजीज आपनकर ये कोनला इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज द करेक्ट आंसर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Usutu virus that was recently detected in Scotland for the first time is primarily spread by which organism? Hala, Usutu virus ka dara koi is mate mosquito is the correct answer. Kone gala mosquito is the correct answer. Which state government launched the TD and DPT triple vaccination campaign in June 2026? Okay, tetanus or diphtheria? Kiye karchi mate kontu Gujarat is the correct answer. Gujarat recently launched the TD, tetanus and diphtheria, and DPT, diphtheria, pertussis and tetanus triple vaccination campaign 2026 targeting nearly 19 lakh school children. Next देखिबा Sarinda, queen pineapple and Risa pachra Rignai recently seen in news are GI tag product from which state? मते कोंतु Sarinda, queen pineapple and Risa pachra recently seen in news are GI tag product from which state? तो आंसर कोन जे मते कोंतु आंसर इज Tripura is the correct answer. Okay, Tripura is the correct answer. Next देखिबा which Indian city is the host of senior Asian fencing championship 2026 को इंडियन सिटी होस्ट करिछि सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 को तो आंसर कोन गेला न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ओके न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा द योगा पार्क पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री योगा पार्क पोर्टल को मिनिस्ट्री लॉन्च करिछि हां द मिनिस्टर नाउ इज मिनिस्टर ऑफ आयुष इज द करेक्ट आंसर आयुष ही करेबो किए करेबो मते कोन किए करेबो हला व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्थ केयर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द Armed Forces Medical Services to provide advanced free ophthalmic treatment in remote region. What is the name of the healthcare initiative launched by the Armed Forces Medical Services to provide advanced free ophthalmic treatment in remote region? तो आंसर है Operation Drishti is the correct answer. Operation Drishti is the correct answer. बुझी पाले? नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन कहूची नेक्स्ट कहूची व्हाट इज द थीम ऑफ द नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नशा मुक्त भारत कोन
कहले कौन सर सर थ्योरी पढ़ेबे पैसा ना थ्योरी पढ़ेबे सुकुमार सुमन कुमार पैसा टिके दियो तापर थ्योरी पढ़ेगा तुम दौन सुमन कुमार तुम पैसा देले समस्त पढ़ेदेवी तुम एकुटिया पैसा देले समस्त पढ़ेदेवी है तुम ही दौन बोली पढ़ूनी बुझल कि ना किए 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 भल लगे कमेंट बोले सका सका कहीं कमेंट करना किसी हाँ हाँ पैसा ना थ्योरी पढ़े मजा आसगला कमेंट देखी सका नाइस व्हाट इज द थीम ऑफ द नशामुक्त भारत सप्ताह 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो ये आंसर कौन मत कहते नशामुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान ओके जीवा आगे को बढ़िया नेक्स्ट 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 क्वेश्चन कहवा हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक अगत्या द यूनिफायर हला हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक अगत्या द यूनिफायर कोई आंसर कौन हम नाई करेन्ट अफेयर्स थ्योरी पढ़ा होची डेली मु जो क्लास करोची सेगुड़ा न देखिकी है 2 के 2 न पढ़ी 25 पंचा केते जदि पढ़िया चाहिए 25 सहजे 24 केते जो पढ़िया चाहिए ताले हम एमती है ना है मु सब पढ़ाऊँ यूट्यूब रे बट डेली पढ़ला मंथली को मुझे 1.5 घंटा रिविजन करी कि 2 घंटा रिविजन करी क्वेश्चन आंसर करी किंतु किसी महानुभाव मैंने कहे नाई नाई मंथली भलसे पढ़ा भलसे ही पढ़ाऊँ मु किंतु रेगुलर फॉर्मेट रे पढ़ाऊँ मंथली पढ़ा के समय लगे जान करंट अफेयर्स मंथली पढ़ा जेन्युइनली कहि है मिनिमम 8 घंटा 10 घंटा अच्छा क्या थ्योरी पढ़ार अच्छी तो काली संभव आयस गोटे लास्ट मंथ करंट अफेयर्स नेबी जून मुझे अलरेडी भाविकी प्लान हो सारे कंटेंट काम चली काली समस्ते थ्योरी पढ़ा आसो मुझे जानी तुम भर किसी गण्यमान्य व्यक्ति आज कहे थ्योरी पढ़ाई काली ठीक जो समय आसीज सा होनी सा कुंथेले आउ सर पढ़ी सर चली घर को निद लगे सर थ्योरी पढ़ला बेलू हाँ बुझल तो काली देखा काली केते जन थ्योरी क्लास रे बस देखा काली केते जन थ्योरी क्लास रे बस काली 3-4 घंटा क्लास मुझे पूरा नेबी 3-4 घंटा मुझे क्लास नेबी संभव आईएएस रे है देखुची केते जन काली एएसओ पई आसीबो ओपीएससी पई आसीबो लेट्स सी ना मत कहबार थिला गोटे वे जो थी कि संभव आईएएस क्लासटा को तुम आगे जनईदेली है जो मुझे काली पढ़ेबी ओसीएस तुम बुझीपार थैंक्स टू हिम जे कहला मुझे सब जिन मन पकड़ कहीपारे जीवा तो समा भट्ट एंड डॉक्टर एमएन सुद्धा नेक्स्ट देखा द 9th एशिया डेंगू समिट 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री है द 9th एशिया डेंगू समिट वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री व्हाट इज द करेक्ट आंसर आंसर कह ना मशा कामुड़ी देवी आंसर कह ना मशा कामुड़ी देवी है तो आंसर कौन सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर इंडिया तो ना मशा कौन कामुड़े चलो आगे बढ़िया according to the sensor towers app performance insights report which application become the most downloaded digital wallet app globally what is the correct answer according to sensor tower app performance insight report which application become the most downloaded digital wallet app globally तो आंसर कौन आपनकर फोन पे इज द करेक्ट आंसर कौन है फोन पे इज द करेक्ट आंसर एटा समस्त जानी फोन पे सब अधिक डाउनलोड कराई प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी है प्रोजेक्ट Great Indian Bustard GIB that was recently seen in news is related to conservation of fish species project GIB आपनकर कहा सतो conservation को नहीं मते को Great Indian Bustard आपनकर GIB नेक्स्ट देखिबा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस प्रति वर्ष को दिन आपनकर ऑब्जर्व करा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस प्रति वर्ष जून 16 रे ऑब्जर्व करा जाए केबे करा जाए जून 16 रे ऑब्जर्व करा जाए फैमिली रेमिटेंसेस हम जदी कहिबा हला अच्छा रेमिटेंस रिसीविंग रे वर्ल्ड रे टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री कोटा रेमिटेंस रिसीविंग रे वर्ल्ड रे टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री कोटा मते कहि दियौ सबटो अधिक रेमिटेंस के रिसीव करू व्हाट इज द करेक्ट आंसर टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री के तो जिबा जारडालू मैंगो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए फेमस मैंगो वेराइटी फ्रॉम व्हिच स्टेट तो आंसर होला बिहार इज द करेक्ट आंसर जारडालू मैंगो ओके अरे सिविल्स रे कोन ओडिया इंग्लिश आनिबे सिविल्स रे इंग्लिश ही खाली रहइबो ओडिया रे बुझेइबे हला तो बिहार जारडालू मैंगो also known as the जारडालू is famous mango variety from Bhagalpur Bihar next देखिबा जुनो which recently released its first scientific result on neutrino flavor oscillation is located in which country juno which recently released its first scientific result on neutrino flavor oscillation is located in which country तो China is the correct answer हला China is the correct answer next question देखिबा तासगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम
तासगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तासगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आपनकर का द्वारा लॉन्च कराई? महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च कराई हला, महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च कराई। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट recorded the highest fiscal deficit in FY25 according to the data from a control and auditor general report? Which state recorded the highest fiscal deficit in FY25? आपनकर आंसर कणाला मेघालय इज द करेक्ट आंसर हला, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए मते कहि दियो। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जून 17 रे ऑब्जर्व करा जाए हला, जून 17 रे वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व करा जाए। मते कोन प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल केबे आस्थिला? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आपनकर केबे आसीथिला? कहि दियौ रे। नेक्स्ट देखिबा, ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप कोठी अंगुर कोठी आंब कोठी सेव ए सब जिंस चलछि आज करंट अफेयर्स रे। ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो स्टेट ना कण गला तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। Recently, researchers from Mumbai, Kochi and Japan used GRAPES 3 telescope to study how the Earth's upper atmosphere temperature and sun's magnetic field influence months, which are subatomic particles of the originating from the space. Oh, भितरु गल तमे साइंटिस्ट हे चलो आगु बढ़िबा। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया GHCI, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया GHCI was developed by which ministry? मतलब कौन को मिनिस्टर डेवलप करा हिच? ओके, कौन डेवलप करा हिच? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। Ministry of New and Renewable Energy is the correct answer. Next question देखिबा, which organization released the Children's Climate Risk Report 2026? Which organization released the Children's Climate Risk Report 2026? तो ध्यान संगला UNICEF is the correct answer. United Nations Children's Fund is the correct answer. Now joint crediting mechanism. The joint crediting mechanism is a bilateral carbon crediting initiative launched by which ministry? हला, joint crediting mechanism is a bilateral crediting आपनकर carbon crediting initiative launched by which country? तो country ना गणा जापान is the correct answer. Japan is the correct answer. Next question देखिबा, the C-box portal was launched by which ministry? The C-box portal आपनकर को मिनिस्टर द्वारा लॉन्च कराइछ मते कोनतो? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? एनीवन हियर मते कहि परिबे? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? जून 18 रे ऑब्जर्व करा जाए। केबे करा जाए? जून 18 रे करा जाए हला। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 18 टू प्रमोट सस्टेनेबल फूड सिस्टम हला। नेक्स्ट देखिबा, पोवाई लेक कोन कहला? पोवाई लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? पोवाई लेक आपनकर कोठी लोकेटेड मते कहि दियंतु। एनीवन हियर? पोवाई लेक आपनकर महाराष्ट्र लोकेटेड हला। 1.85 करोड़ रो प्लान इट रीडेवलप करे पे पोवाई लेक पे प्लान करा होची। According to Global Startup Ecosystem Report 2026, which Indian city is ranked second Asian artificial intelligence native startup cluster after Beijing? What is the correct answer? According to Global Startup Ecosystem Report 2026, which Indian city is ranked second in Asia's artificial intelligence native startup cluster after Beijing? तो आंसर कणाला आपनकर बेंगलुरु is the correct answer. Bangalore is the correct answer. The Global Startup Ecosystem Report 2026 launched at 𝐌𝐄𝐆𝐀 in Paris on 17 June 2026. Next देखिबा, San Andreas fault. San Andreas fault that was recently seen in news is located in which country? What is the correct answer? San Andreas fault that was recently seen in news is located in which country? United States is the correct answer. United States is the correct answer. Next देखिबा, World Day to Combat Desertification. World Day to Combat desertification and drought is observed annually on which day? मते कहंतु World Day to Combat desertification and drought is observed annually on which day? तो ध्यान रखना जून 17 is the correct answer. कौन गला? जून 17 is the correct answer. World Day to Combat desertification and drought is observed annually June 17. Next देखिबा, द आपनकर थमिराबरानी रिवर, द थमिराबरानी रिवर जेटा रिसेंटली न्यूज थिला flows entirely through which state? The Thamirabarani river today recently news थिला flows entirely through which state? तो आंसर वाला तमिलनाडु is the correct answer. Okay, Tamil Nadu is the correct answer. कौन by news थिला आपनकर declining otter population. Otter मान population सेठी कमी जाउची हला, ये तमिलनाडु देखि completely जाउची। हां ठीक अछि। also known as ताम्रपाणी आपनकर ताम्रपारिणी आ पुरुनाई रिवर भी ताको कोहा जाय। ओके, rare perennial river flowing entirely through Tamil Nadu, right? Then देखिबा, National Pharmaceutical Pricing Authority. National Pharmaceutical Pricing Authority was established under which ministry? National
फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी आपनकर को मिनिस्ट्री द्वारा एस्टाब्लिश कराई मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज द करेक्ट आंसर recently the national pharmaceutical pricing authority increased the ceiling prices of 2 platinum based cancer drug by 50% due to rising raw material cost and shortages. Okay, next देखिए the Mombasa declaration recently adopted by 15 countries aims to combat which issue? The Mombasa declaration recently adopted by 15 countries aims to combat which issue? तो आंसर करने वाला मतलब इलीगल फिशिंग मोम्बासा डिक्लेरेशन रे इलीगल फिशिंग को कंट्रोल करिया पई एटी प्लान चलचे आपनकर नेक्स्ट देखिबा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर कोन गेला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission तो आंसर कौन गला डॉक्टर शैवाल चट्टोपाध्याय हला डॉक्टर शैवाल चट्टोपाध्याय इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची भारत बिल्डकॉन 2026 भारत बिल्डकॉन 2026 that was recently inaugurated in Delhi is associated with sector कह देडी आंसर कौन भारत बिल्डकॉन 2026 आपनकर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स इज द करेक्ट आंसर Which country is the host of exercise Khan Quest 2026? Which country is the host of exercise Khan Quest 2026? Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan. को country आपनकर host exercise Khan Quest तो आंसर करना Mongolia is the correct answer. कौन है Mongolia is the correct answer. Next देखिबा what is the theme of the first BRICS MSME forum 2026 held in Agra? What is the theme of first BRICS MSME forum 2026 held in Agra तो आंसर करना building for resilience innovation cooperation and sustainability building for resilience innovation cooperation and sustainability next देखिए the reward program that was recently seen in news is assisted by which organization the reward program that was recently seen in news is assisted by which organization तो आंसर करना World Bank is the correct answer World Bank is the correct answer. The recently National Rainfed Area Authority held a meeting on draft National Technical Guideline for improved watershed management under reward program. Which institute has developed the BDIM electrolyte? Which institute has developed the BDIM electrolyte additive to improve the performance of aqueous zinc ion batteries? What is the correct answer? The answer करना Institute of Nano Science and Technology Mohali is the correct answer. Institute of Nano Science of Mohali is the correct answer. Hala. Next देखिए the World Gold Council recently in news. The World Gold Council recently in news is headquartered in which city? World Gold Council अपना को headquarters में कौन दो? London is the correct answer. कौन है गला? London is the correct answer. The World Gold Council recently in the news is headquartered in which city? अपना को London is the correct answer. Next देखिए which institution become India's highest ranked institution in the QS World University Ranking 2027? Which institution become the India's highest ranked institution in the QS World University Ranking 2027? That Indian Institute of Technology Delhi is the correct answer. Indian Institute of Technology Delhi is the correct answer. Hello. Next देखिए World Sickle Cell Awareness Day. World Sickle Cell Awareness Day is observed every on which day? Sickle Cell Awareness Day प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए जून 19 रे ऑब्जर्व करा जाए हला सिकल सेल ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची रिसेंटली द फर्स्ट ऑफ द 6 इंडिजिनस एयर क्वेश्चन व्हीकल एससीवी वाज इंडक्टेड इनटू सर्विस बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन व्हिच स्टेट व्हाट इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली द फर्स्ट ऑफ 6 इंडिजिनस एयर क्वेश्चन व्हीकल वाज इंडक्टेड इनटू सर्विस बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन व्हिच स्टेट तो आंसर गला गोवा इज द करेक्ट आंसर कोन गला गोवा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हां बड्ड प्रश्नटा देखा जाउची हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट रिलीज बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को अपन को ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करछ मते कहि दियंतु हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करछ अपन आंसर ला FAO एंड WFP इज द करेक्ट आंसर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिसी के अपन हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को रिलीज करछंती हला इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपन को जगह देखिया कोन कोंदो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्टेट देखिया कोन अपन अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हला अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट
with the government of Arunachal Pradesh for the development of the 3097 megawatt Italian hydroelectric project. चलो हम देखिए the National Internet Exchange of India, National Internet Exchange of India कौन ला ठीक है तो हाँ निक्सी functions under which ministry? Nixie functions under which ministry? Ministry of Electronics and Information Technology is the correct answer. Ministry of Electronics and Information Technology is the correct answer. Okay, next देखिए which Indian jurist was elected as the judge of International Tribunal for Law of the Sea, ITLOS? Which Indian jurist was elected as the judge of the International Tribunal for the Law of the Sea for the 2026 to 2035 term? What is the correct answer? तो आंसर गणला आपनकर Bimal N Patel is the correct answer. Bimal N Patel is the correct answer. The Trishna satellite mission. The Trishna satellite mission is a joint initiative between India and which country? The Trishna satellite mission गोटे joint initiative को दुटा country भितर मते कोंतु India और France भितर. का भितर India और France भितर. Next question देखिबा. Which state is home to the Lakhanpur coal gasification project, India's first commercial scale coal to ammonium nitrate facility? मतलब कहतु which state is home to Lakhanpur coal gasification project, India's first commercial coal to ammonium nitrate facility? तो आंसर करना Odisha is the correct answer. हला Odisha is the correct answer. Next question देखिबा. The 26th All India Fingerprint Conference 2026 was held in which city? The 26th wait. The 26th All India Fingerprint Conference 2026 was held in which city? तो आंसर करना New Delhi is the correct answer. New Delhi is the correct answer. हला नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट आपनकर कहूची व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन वज्रपात? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन वज्रपात दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हां गरुड़ वरुण शक्ति आपनकर फ्रांस सहित मनन करछि. गरुड़ वरुण शक्ति आपनकर सबुडा फ्रांस सहित अछि. मते कहंतु ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन वज्रपात रो ऑब्जेक्टिव मते कहि दन उत्तर प्रदेश रे आपनकर डिसमेंटल क्रिमिनल नेटवर्क्स एंड देयर डिजिटल प्रेजेंस. नेक्स्ट देखिबा. राइट. The Supreme Court recently held that the right to walk on a demarcated footpath is a protected under which article of the Constitution? Supreme Court कहला कि रास्ता रे चलीबाटा भी गोटे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 अंडर रे. आर्टिकल 21 अंडर रे आपनकर आर्टिकल 19 1 क्लॉज डी आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 आपनकर बी होबो इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 19 1 डी एंड आर्टिकल 21. ओके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपनकर ता अंडर तुम चलिकी बुलिकी रास्ता चली पार तुम फंडामेंटल राइट. गाड़ी बाड़ी पार तुमको आगुरी गाड़ी बाड़ी पार्ला है गाड़ी बाड़ी पार. सलमान खान छड़ा सब बाड़ी पारे. सॉरी सलमान खान छड़ा कहीं बाड़ी पारे. सलमान खान चाहे बाड़ी पारे. सलमान भाई. नेक्स्ट देखिबा. Which country has launched its first sovereign retail treasury sukuk program for retail investor? Which country has launched its first sovereign retail treasury sukuk program for the retail investor? तो आंसर वाला UAE is the correct answer. United Arab Emirates is the correct answer. Next देखिबा. Project Super 50, a civil services examination guidance program. Project Super 50, a civil services examination guidance program was launched by which program? The National Commission for Scheduled Caste is the correct answer. हला. नेक्स्ट देखिबा. वर्ल्ड रेफ्यूजी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? जून 20 रे करा जाए. केबे करा जाए? जून 20 रे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे. नेक्स्ट देखिबा. Which operation was recently launched by Delhi Police to crack down on cybercrime and online fraud network across the country? Which operation was recently launched by Delhi Police to crack down on cybercrime and online fraud network across the country? तो आंसर कौन होला? Operation Sahayok is 5.0 is the correct answer. Operation Sahayok is the correct answer. 5.0 is the correct answer. Next देखिबा. What is the theme of Autistic Pride Day 2026? What is the theme of Autistic Pride Day 2026? तो आंसर कौन होला आपनकर? Recognition, representation and reform is the correct answer. Okay, जानी पारले एटी जिंस. तापर मैं आगु देखिबा. Next कहूची which state or UT approved the constitution of snow leopard and high altitude nature conservation society? Which state or UT? सर आपनकर कंप्यूटर क्लास मात्र एग्जाम 2 दिन पूर्व दुईटा सारा पढ़ी की जाइथिले. भलो से मोर कंप्यूटर रे मात्र गोटे भूल आ सब गुडा को ठीक हला गार्डन कर दला. दिल गार्डन कर दला सकाळ. चलो आंसर कोन होला? आंध्र लद्दाख is the correct answer. Which state is the host of Creators Zone Digital Summit 2026? Which state is the host of Creators Zone Digital Summit 2026? तो आंसर कोन होला मते कोंतु. तो आंसर होला आंध्र प्रदेश is the correct answer.
नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लॉन्च टू एनकरेज जॉब क्रिएशन इन द फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन जो फ्लैगशिप स्कीम से कथा आपनकर स्कीम नाटा कोन पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पीएम विकसित भारत रोजगार योजना घंटे 20 मिनिट हेची टिके अपेक्षा कर काई तो खाली व्यस्त हेलो घर को जीबी बहु डाकिलानी आ ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो व्हिच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड as the vice president of the financial action task force FATF रो vice president के बनचन मते कोन तो आंसर करला आपनकर विवेक अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर ओके विवेक अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क इज ए नेशनल क्लाइमेट मॉनिटरिंग इनिशिएटिव conceptualized by which institution what is the correct answer Bharat climate observation is a national climate monitoring initiative conceptualized by which institution what is the correct answer तो आंसर कोन जपन कर मते कोन तो पीएम किसान अन्नदाता सुखी बाबा स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हला तो आंसर हला आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू रिसीव द वर्ल्ड प्राइज इन फिजिक्स रे वर्ल्ड प्राइज के जीति मते कोन तो फिजिक्स रे वर्ल्ड प्राइज आपन जीति जैनेन्द्र के जैन के जीति जैनेन्द्र के जैन जीति व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट सोफिया 2026 रिपोर्ट आपनकर को ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करछ मते कह दियंतु सोफिया तो कोन गेला आपनकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर व्हिच सिटी इज द वेन्यू फॉर 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग व्हिच कंट्री ओके ना मु क्वेश्चन को 10 थर पढ़ी है तापर आसबि देखी हाँ आंसर गुरुग्राम है ठीक है मुझे गज मूर्ख दुनिया बड़ मूर्ख गालुआ पिला मत मझे बड़ रिप्लाई देवा बढ़िया इच्छा अच्छे मझे लंबा चलती ना सेसन है आसिली किसी जन गालुआ अच्छा किसी जन गालुआ द्वारा मोटिवेटेड दी प्रकार जिनस अच्छे है गालुआ और गालुआ द्वारा मोटिवेटेड बहुत कम कर माहिर थे से भावती आम ही दुनिया कौन कहले 30 मार्क खान से जो किए गोटे गला कमेंट सेक्शन में मु कमेंट को धरली टे चलो तो हाफ मिनिट से मुझे रिप्लाई देवी ना 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 साइड हेबी मुझे रिप्लाई देवी से पिला कहे मुझे गलुआ हेबी तुम जहाँ कर सार मु गलुआ हेबी से कहे है ना मुझे क्या गोटे मोटिवेटेड होगी आसिक एमती हेबी तो सी मत कहते मैंने मुझे कहबी सीटा किए किएटा किए तुम देख है देखा होने सर हाँ गलुआ को 12 बेटी चाष औ कस कर है सत कहले बाधुची तुम्हें जान तुम्हें कौन कर तुम्हें कौन पढ़ेब है यही सब धंदा आउ चल ओके नेक्स्ट देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम ओके हाँ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम तो आंसर करला आपनकर प्रभात कुमार इज द करेक्ट आंसर प्रभात कुमार इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिबा हला योगेंद्र 2026 फ्लैगशिप मास योगा इनिशिएटिव लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट व्हाट इज द करेक्ट आंसर आगो टिके बागी सागी कहतली तो टिके मुंडरे चढ़ी गले सब है मुंडरे चढ़ी गले तो आंसर कौन हम योगेंद्र 2026 फ्लैगशिप मास योगा इनिशिएटिव लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट तो आंसर करला आपन आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ना जानि पन योगेंद्र कोनटा होछ आपन मत कोना ना जानि पन ना ना जानि पन योगेंद्र ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कौन एट द एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 द इंडियन वुमेन 4x100 रिले टीम सिक्योर्ड व्हिच मेडल मत कौन मेडल किए जीतिक आसी को मेडल आम जीतिक आस मत कह एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 इंडियन वुमेन 4x100 मीटर रिले टीम सिक्योर्ड व्हिच मेडल को मेडल जीतिक आसी आप समस्त आंसर कहि परिबे आई नो आम या बारंबार रिविजन भी करिसेंती वीकली करिसेंती डेली करिसेंती हला आज मंथली आपन गोटे आंसर देबार अछि गोल्ड सिल्वर ब्रोंज और नन ऑफ द अबव ओके गोल्ड 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 तो आपनकर गोल्ड मेडल इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिबा इंडिया वोन FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025-2026 by defeating which country in the final India won FIH Hockey Women's Nations Cup 2025 and 2026 by defeating which country in the final? Australia, Germany, Netherlands and New Zealand. को आंसर कौन हम?
ओके 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 आसीगला आसीगला हाँ मुझे कहती कि क्वेश्चन आंसर तुम्हें देदेव 100-150 पिला बस आंसर समस्ते देदेवे तो मत भाविया दरकार भी नहीं आंसर कौन ठीक कहली तो योगा फॉर हेल्थ एंजिंग हम देखिले तो हाँ नॉर्थ ईस्ट राजेश ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट आपन कोडी अछि आपन मेघालय आपन समस्त आंसर कहले मते कोन दरकार जिंस करबा दरकार नहीं ना हला हे गला साउंड आसिला अरे आसिला ना आसिला नहीं एबे जे साउंड आसिला नहीं ये भाई हाँ 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 को आंसर कौन हम रेडी रेडी आसीगला तापर आंसर कौन हम मते कह which organization has launched Drunix an open source blockchain platform हला which organization has launched Drunix an open source blockchain platform तो आंसर कौन हला NPCI is the correct answer National Payment Corporation of India National Payment Corporation of India NPCI बने NPCI UPI भी आपनकर बनै छै NPCI UPI भी मध्य आपनकर बनै छै एटा आंसर कौन हिजबो Jonathan recognized as the world's oldest known terrestrial animal currently आपनकर को आइलैंड रे अछि सेंट हेलिना आइलैंड रे अछि हला तो सेंट हेलिना इज द करेक्ट आंसर नेशनल रीडिंग डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए नेशनल रीडिंग डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए आपनकर जून 19 नेशनल रीडिंग डे आपनकर केबे ऑब्जर्व करा जाए जून 19 रे ऑब्जर्व करा जाए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रे इंडिया रैंक केते आपनकर जोटा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपनकर रिलीज करछि कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करछि तो आंसर करला 78th इज द करेक्ट आंसर हला 78th इज द करेक्ट आंसर हाँ दी जन आपनकर पद्म अवार्ड पाइछंती आपनकर रिसेंटली तांको अवार्ड मिली 4 जन पाइछंती पद्म अवार्ड सीमांचल पात्र जने होचंती आपनकर शरद कुमार पात्र आपनकर जने नेक्स्ट देखिबा द डोंगफेंग 17 is a hypersonic missile developed by which country the Dongfeng is a hypersonic missile by which country तो आंसर करला चाइना इज द करेक्ट आंसर एबे हमें लास्ट 2-3 दिन रो क्वेश्चन को पळे आसले पाखे आसले हला तो डोंगफेंग 17 इज हाइपरसोनिक मिसाइल जदि 4 दिन रो कंटेंट तुमको मने पडुनी ताले डेली सकाळे पढ बसिकी हला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची रामनाथपुरम recently seen in news for India's first 3D printed AI reef project artificial reef project is located in which state रामनाथपुरम आपनकर को स्टेट रे लोकेटेड मते कहि दंतु स्टेट ना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र केरला चाइना तो आपने कहले लाइन साइन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आपनकर बढ़िया कथा हला चाइना कथा आपन कहले एटी मते एटी कहि दंतु रामनाथपुरम कोउटी आपनकर अछि रामनाथपुरम आपनकर तमिलनाडु अछि ए तो आपन कहि सारलेनी आ बुझन तो ए आंसर कहि भी सारलेनी से भीतर हला ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कहूची खुरासानी इमली रिसेंटली अवार्डेड जीआई टैग खुरासानी इमली रिसेंटली जीआई टैग अवार्ड पाइछे ठीक इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट खुरासानी आपनकर इमली रिसेंटली अवार्डेड जीआई टैग इज एसोसिएटेड विथ स्टेट तो आंसर करला मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर कोन गेला मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर द रिसेंटली खुरासानी इमली हला द फ्रूट ऑफ मंडूज आइकॉनिक बाउ ट्री जीआई टैग पाइला छडंतु ए न्यू स्पीशीज ऑफ वाइल्ड ब्रिंजल नेम्ड सोलोनम पांडे was recently discovered in which state or UT मत कोन गोटे नवा स्पीशीज वाइल्ड ब्रिंजल रो सोलोनम पांडे आपनकर एटी जे आपनकर हां रिसेंटली डिस्कवर है जे टैग डिस्कवर तो खोजी की पाइछंती हला ये को जागर खोजी की पाइछंती मते कहि दियो बहुत जन कहछन सर मध्य प्रदेश कोडा लागि रे अच्छा सेटा मध्य प्रदेश कहि देलो एठी आंसर कोन मते कहि दियो अंडमान निकोबर इज द करेक्ट आंसर हला अंडमान निकोबर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसीबा द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी न्यू दिल्ली चेन्नई हैदराबाद एंड बेंगलुरु न्यू दिल्ली चेन्नई हैदराबाद एंड बेंगलुरु तो आंसर करला न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हला न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली चेयर्ड बाय इंडियाज एनएसए अजित डोभाल इंडिया एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल आपनकर राइट नेक्स्ट देखिबा who was honored as the best male athlete of the year at the Indian Athletics Awards 2025 ceremony who was honored was the best male athlete of the year at the Indian Athletics Award 2025 ceremony तो आपनकर कोन गेला नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर कोन गेला नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर according to the UNCTAD report which country has become the world top sheep recycling nation in 2025 sheep को recycle करिबार आपनकर हला सीप को रिसाइकल करिबार आपनकर मते कोहंतो इंडिया आपनकर टॉप रे आसुछ इंडिया आपनकर टॉप रे आसुछ
बुझी पाले नेक्स्ट देखिबा व्हिच सिटी इज द होस्ट सिटी टू द 7th एडिशन ऑफ द मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 देखो मु कंटेंट को सारी देबा चाहले तो सार देबी एबे हला 10टा बाजिलानी किंतु मते माने जल्दी सारिबार नै जेतिकी अछि सेतिकी हम पढाई देबी तुम मानको सी आउ 10-15 मिनिट नौ हेले मु पढाई दउछ तुम मानको परे जेतले के आपण देखिबे ना आपण को लाइव रो इंपैक्ट फील होबने आपण रिकॉर्डेड फील देखिबे तो सही फॉर्मेट रे मु कहू हला व्हिच इट इज द होस्ट ऑफ सिटी इन द 7th एडिशन ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट दिया आंसर गला बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर ओके बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम ओके which district of Jammu and Kashmir received the Scotch Award for implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme. तो कौन है जीवा Poonch district is the correct answer. Poonch district is the correct answer. हला next देखिबा next कोची the Mela Kheer Bhavani festival. The Mela Kheer Bhavani festival is mainly celebrated in which state or UT annually? The Mela Kheer Bhavani festival आपनकर कोठी सेलिब्रेट होछ मते कोन दो जम्मू एंड कश्मीर रे देखिया मिलछ कोठी जम्मू एंड कश्मीर देखिया मिलछ नेक्स्ट देखिबा नाभा फोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट नाभा फोर्ट आपनकर को स्टेट रे लोकेटेड मते कहि दियंतु पंजाब इज द करेक्ट आंसर हला पंजाब इज द करेक्ट आंसर इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय तो ये आंसर कोन जे मते कोनतो जून 23 इज द करेक्ट आंसर हला एई वर्ष रो थीम होची लेट्स मूव यू कैन डू दिस ओके लेट्स मूव यू कैन डू दिस which university become the first in India to secure 4 ISO certifications simultaneously in June 2026 which university become the first in India to secure 4 ISO certifications simultaneously in June 2026 तो देखिए केजन आंसर ठीक दउछ ठी राइट आंसर जून 23 तो समस्त आंसर ठीक कहले इट्स ओके तो ये आंसर कोन आपन करे जीवो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा योगा संगम 2026 is a flagship yoga initiative of which armed force योगा संगम 2026 गोटे फ्लैगशिप योगा इनिशिएटिव को आर्म फोर्स मते कहि दियंतो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडियन एयर फोर्स या सीएपीएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड लेट्स सी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी अपन देखिले तो ये आंसर कोन हला आपनकर इंडियन कोस्ट गार्ड इज द करेक्ट आंसर हला इंडियन कोस्ट गार्ड इज द करेक्ट आंसर तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपनकर देखंतो एठी थ्रू इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव योगा संगम 2026 अपन लिखले एठी कोन हला व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर इंप्रूविंग क्राइम डाटा एक्सेस फॉर पुलिस व्हाट इज द थीम ऑफ द एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर इंप्रूविंग क्राइम डाटा एक्सेस फॉर द पुलिस तो डांस करन हला अभिज्ञान ऐप इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिबा कलमकारी पेंटिंग that was recently mentioned in news is traditionally associated with which state कलमकारी पेंटिंग हमर ट्रेडिशनली का साथ एसोसिएटेड मते कोन आंध्र प्रदेश साथ एसोसिएटेड हला वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय जून 22 रे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे प्रति वर्ष जून 22 रे ऑब्जर्व करा जाय हला नेक्स्ट देखिबा द ब्राह्मणी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच रिवर्स ब्राह्मणी रिवर को दुटा कॉन्फ्लुएंस से बने मते को शंख और साउथ को हला न्यूज रे कोन पळितला आपन मानकर मते कोनतो प्लास्टिक बहुत अधिक आपन देखिया मिलुछि हला ब्राह्मणी रिवर आपन मानकर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन बड़ी बड़ी चलछि माइक्रोप्लास्टिक हला नेक्स्ट मोटा भाई को देखि होबनी चलो हां एटा जानिनियो ठीक एटा नाटा जानिनियो राजस्थान कॉन्स्टिट्यूट करिछि हाई लेवल कमिटी आपन मानकर कोन पे मन देखंतो यूसीसी को इंप्लीमेंट करे आगु राजस्थान रे यूसीसी आसी पारे एई नाटा जानथन उत्तराखंड बिकम द इंडिया 6th फुली लिटरेट स्टेट उत्तराखंड इंडिया रो 6 नंबर फुली लिटरेट स्टेट हला उल्लास प्रोग्राम अंडर रे मिजोरम टॉप रे थिला सेकंड रे गोवा थर्ड रे त्रिपुरा हिमाचल फोर्थ रे सिक्किम फिफ्थ रे हला लास्ट के आपन राजस्थान लास्ट रे गेला अंबुबाची मेला आपनकर मेनली सेलिब्रेट होची को स्टेट रे अंबुबाची मेला मेनली को स्टेट रे सेलिब्रेट होची आपनकर आसाम इज द करेक्ट आंसर अंबुबाची मेला कोठी सेलिब्रेट होची आसाम इज द करेक्ट आंसर हेलो नेक्स्ट देखिबा व्हिच स्पोर्ट हैज एमर्ज्ड एज ए मॉडल फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट इन इंडिया व्हिच स्पोर्ट हैज एमर्ज्ड एज ए मॉडल फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट इन इंडिया तो आंसर हला वीओ चिदंबरम पोर्ट अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द naphex.in e-auction portal, the naphex.in e-auction portal has been launched by which organization? The naphex.in e-auction portal has been launched by which organization? तो आंसर करला आपनकर naphex, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India is the correct answer. हाँ, नेक्स्ट देखिबा थेवा आर्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन स्टेट? थेवा आर्ट आपनकर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड को इंडियन स्टेट से मते कहि दियो थेवा आर्ट एनीवन हियर ट्राई टू आंसर. थेवा आर्ट आपनकर राजस्थान से एसोसिएटेड का से राजस्थान से एसोसिएटेड जिबा वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स को स्टेट गवर्नमेंट आपनकर स्कूल ऑन व्हील्स को आपनकर मते कोन एटी लॉन्च करिछि ए मोबाइल क्लासरूम इनिशिएटिव यूजिंग रिटायर्ड बसेस. We state government launched school on wheels, a mobile classroom initiative using retired buses. तो ध्यान से कहला गुजरात is the correct answer. गुजरात is the correct answer. Next question देखिबा को स्टेट होस्ट करछि फर्स्ट एवर 2026 आइची नगोया एशियन गेम्स फॉर फन रन. What is the correct answer? We state hosted the first ever 2026 आइची नगोया एशियन गेम्स फन रन. तो ध्यान से कहला आपनकर केरला is the correct answer. Next देखिबा the Thaimaman Thanga Mothirathitham. The Thaimaman Thanga Mothirathitham Maternal Uncle's Gold Ring Scheme is a major welfare initiative launched by which state? तो आंसर करला तमिलनाडु. जन्म होला माने भणजा को गोटे सोना मुदी दिया जीवो हला सोना मुदी दिया जीवो. नेक्स्ट देखिबा हां तो who has been reappointed as the Solicitor General of India in 2026? इंडिया रे सॉलिसिटर जनरल किए अछन मते कोनतो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अछन आपनकर के अछन तुषार मेहता आपनकर सॉलिसिटर जनरल अछन. नेक्स्ट देखिबा वी स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट बसिरहाट सुंदरबन जांगीपुर एंड हमर आरामबाग. व्हाट इज द करेक्ट आंसर मते कहि दन आंसर कोन हबो हला को स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ द दिस डिस्ट्रिक्ट्स बसिरहाट सुंदरबन जांगीपुरा एंड आरामबाग. आपनकर आंसर कोन हला वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर. Teplizumab is the fast disease modifying immunotherapy developed for which disease? Teplizumab is the fast disease modifying immunotherapy developed for which disease? तो आंसर करला टाइप 1 डायबिटीज इज द करेक्ट आंसर. टाइप 1 डायबिटीज स्पीड जिबा ठीक है. चलो द वैगाई रिवर आपनकर रिसेंटली न्यूज़ देथला लोकेटेड इन विच स्टेट? वैगाई रिवर आपनकर कोस्ट को रिवर पाखे लोकेटेड मते कोन तो आंसर करला तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. Next, the International Day of Women in Diplomacy is observed annually on which day? International Day of Women in Diplomacy is observed annually on which day? तो आंसर करला जनवरी 24 सॉरी जून 24 इज द करेक्ट आंसर. जून 24 इज द करेक्ट आंसर. जानि पले आपण एटी जीवा आगु बढ़िबा. ओके राइट. नेक्स्ट Ras Laffan gas facility recently in news due to explosion is located in which country? तो आंसर करला कतर इज द करेक्ट आंसर. What is the name of India's heaviest indigenous 120 mm vehicle mounted motor system recently tested in Madhya Pradesh? क्वेश्चन देखो आंसर इजा दरकार माइंड रे. क्वेश्चन देखो माइंड रे आंसर इजा दरकार. तो आंसर करला आपनकर गरुडास्त्र इज द करेक्ट आंसर. कोन गेला गरुडास्त्र इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा biochar recently seen in news is produced by heating agricultural waste under which condition? Biochar recently seen in news is produced by heating agricultural waste under which condition? तो आंसर करला low oxygen is the correct answer. Low oxygen is the correct answer. Next देखिबा Periyar river that was recently seen in news is the longest river of which state? Periyar river that recently news la आपनकर कहार longest मत कोन Kerala is the correct answer. According to the 𝐂𝐀 state finance report 2024-25 which state spent the highest amount of energy subsidies in 2024-25? According to 𝐂𝐀 state finance report 2024-25 which state spent the highest amount of energy subsidy in 2024-25? तो ध्यान से करला राजस्थान is the correct answer. हला राजस्थान is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे आपनकर प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय आपनकर जून 21 इज द करेक्ट आंसर. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जून 21. नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची वोल्कानो दी फुएगो आपनकर रिसेंटली न्यूज़ देथला ड्यू टू एन इरप्शन इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? ऊपर को आपनकर कोन कहूची कहले बता सुना छिटकुची आपनकर ये हला ग्वेतमाला इज द करेक्ट आंसर. हला ग्वेतमाला इज द करेक्ट आंसर. ये सुना पठौछ त नहीं ये सुना दोनी आ गोटे सुना वाला छै वोल्कानो ऑफ फायर एटा को आउची सुना वाला अलगा छै होला. हां आपन को बोरेमिस्टिक मिसाइल रिसेंटली डेवलप कराय छै को कंट्री तोरा मत कोन को कंट्री डेवलप कराय छै? कंट्री नाम छै आपन को रशिया इज द करेक्ट आंसर. द सहरिया ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन व्हिच स्टेट? सहरिया ट्राइब आपन को स्टेट रे मते कोन तो आपन को मध्य प्रदेश एंड राजस्थान इज द करेक्ट आंसर.
मध्य प्रदेश एंड राजस्थान इज द करेक्ट आंसर सुना वाला बोल करना बोल से मन रखछ ना हां हला गुएतमाला लाटे मनकर सरे ट्राइब आपनकर मध्य प्रदेश राजस्थान देखले कोन माने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस इज हेडक्वार्टर इन विच सिटी कौन तो राइट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस इज हेडक्वार्टर इन विच सिटी तो सिटी नाउ हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द विच ओकेजन आपनकर चिल्ड्रंस डे नुआटा आपनकर कोन हो कहले वीर बाल दिवस विल बी द करेक्ट आंसर हला तापर हम आगु बढ़िबा व्हाट इज 31 अटलास दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज 31 अटलास रिसेंटली न्यूज थला जिनसरा कोन मते कह दियो तो जिनसरा होची इंटरस्टेलर कॉमेट इज द करेक्ट आंसर इंटरस्टेलर कॉमेट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी तो आंसर करला आपनकर नवम रेबिया इज द करेक्ट आंसर ओके नवम रेबिया इज द करेक्ट आंसर नेशनल टेक्सटाइल समिट 2026 कोड देखा मिलुचे नेशनल टेक्सटाइल समिट 2026 कोड देखा मिलुचे आपनकर न्यू दिल्ली देखा मिलुचे कोटी न्यू दिल्ली देखा मिलुचे द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर हेल्थ स्कीम वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट फॉर 2.7 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो आंसर करला दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हले नेक्स्ट कहि आपनकर साला साला प्रवेशोत्सव एंड कन्या कलवनी रथ यात्रा आर द स्कूल एनरोलमेंट कैंपेन ऑफ व्हिच स्टेट गुजरात इज द करेक्ट आंसर गुजरात इज द करेक्ट आंसर यूथ कोलैब इनिशिएटिव जॉइंटली कहा द्वारा ऑर्गेनाइज कराई मते कोंतु यूथ कोलैब इनिशिएटिव आपनकर मते कोंतु यूएनडीपी एंड इंडिया एंड सिटी फाउंडेशन द्वारा कराई ठीक अछि ओके जीबा नेक्स्ट देखिबा पासपोर्ट सेवा दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे पासपोर्ट सेवा दिवस आपनकर प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय जून 24 रे करा जाय नेक्स्ट देखिबा हेमिस फेस्टिवल आपनकर मते कोंतु को स्टेट और यूटी देखा मिले आपनकर लद्दाख इज द करेक्ट आंसर हेमिस फेस्टिवल आपन समस्त जानि छथि नेक्स्ट देखिबा महादेव कोली ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन व्हिच स्टेट तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर राइट न्यूज रे कोन पाइथला आपनकर देखंतु ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ क्लाइमेट एडाप्टेशन को नेकी ओके नेक्स्ट द रिसेंटली रिलीज संस्कृत रत्न भंडार हां वायर इत्रवित्रो इज एसोसिएटेड विथ फोक म्यूजिक ट्रेडिशन तो आंसर करला आपनकर वाया इज द करेक्ट आंसर The Clinical Establishment Act 2010 recently amended under which law? The Clinical Establishment Act 2010 recently आपनकर अमेंड कराई को लॉ अंडर रे जन विश्वास एक्ट 2026 हला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोची बेरिजम लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट तो स्टेट ना होची तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर हला प्रोजेक्ट हॉकाई हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच पुलिस फोर्स टू स्ट्रेंथन सर्विलेंस फॉर श्री अमरनाथ यात्रा हला मते कोन किए करि परिबो अमरनाथ यात्रा कोठी परिबो जम्मू कश्मीर पुलिस करिवो ना भाई आउ किए करिवो जम्मू कश्मीर पुलिस करिवो हां व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एआर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एआर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन तो आंसर हला पैसेंजर हेल्थ डिक्लेरेशन एंड डिजीज सर्विलेंस हला एआर सुविधा 2.0 कथाडी को आउछ राइट कोठी आपनकर एटी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन करिছে दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे करछि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे करछि इंडिया रो हां एटे कोन कहला इंडिया रो फर्स्ट हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट मॉडल लॉन्च फ्रॉम व्हिच सिटी इंडिया रो प्रथम हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट मॉडल को सिटी रे लॉन्च हेछि तो सिटी ना कोन वाराणसी इज द करेक्ट आंसर सिटी ना कोन हला वाराणसी इज द करेक्ट आंसर आपनकर हेमिसिलियम डॉट जिना रिसेंटली आपनकर साइंटिस्ट माने देखि जंदे एटा को ऑर्गेनिज्म आपनकर मते कोंतु वॉकिंग शार्क द नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय The Netra Airborne Early Warning Control System is jointly developed by Indian Air Force and which organization? The answer is Indian Air Force and DRDO is the correct answer. Indian Air Force and DRDO is the correct answer. Next, the 8th edition of the Sujal Gram Sambad was organized by Ministry of Jal Shakti under which initiative? The 8th edition of the Sujal Gram Sambad was organized by Ministry of Jal Shakti under which initiative? The answer is Jal Jeevan Mission is the correct answer. The E0FIR system is developed by which organization? E0FIR system is developed by which organization? What is the correct answer? ना एग्जाम रो बड़ ऑप्शन संगे जीव ना तो ये आपंकर I4C हो गला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर E0FIR सिस्टम खाली मन रखिया मु वन लाइनर भी आनी पारंते आपन मानको पय बड़ आपनकर एमसीक्यू ले कोन बा आपन एमसीक्यू मु केवल आंसर पढिबे आपन माइंड रे साइड भी ब्रेन भी परिबो हला मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना इज लॉन्च्ड ऑफ इज अ स्कीम ऑफ स्टेट मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना आपनकर को स्टेट रो गोटे स्कीम मते कोन तो आंसर ला उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हला
Which two Indian environmental conservationists were awarded the Whiteley Gold Award 2026? Whiteley Gold Award को दुजन पाइछन मते कहंतु बड़ बाबू पाइछंती नाही आपनकर प्रवीण शेख पाइछंती और डॉक्टर बरखा सुबा पाइछंती हला ए दुजन पाइछंती कोन अवार्ड पाइछंती आपण मानकर ए अवार्ड पाइ व्हाइटली गोल्ड अवार्ड पाइछंती ताको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाय या को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाय हला ग्रीन ऑस्कर आपण देखिले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट Which country joined the International Big Cat Alliance as its 27th member in June 2026? 27 नंबर मेंबर आपनकर IBC र किए बनुची इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रो 27 नंबर मेंबर किए बनुची बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर बांग्लादेश जॉइन्स इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC 27 मेंबर हिसाब रे the boss scam that was recently seen in news is associated with which type of cyber crime मतलब कौन the boss scam that was recently seen in news is associated with which type of cyber crime that आपनकर हबो CEO impersonation business email compromise मतलब impersonation कोट के आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हेलिना मिसाइल has been developed by which organization what is the correct answer हेलिना मिसाइल आपनकर कहा द्वारा बात कोन जोटे बनाई छ तो आंसर गेला आपनकर DRDO is the correct answer the Kiru hydroelectric power project is being developed under which river Kiru hydroelectric power project आपनकर मते कोन तो को रिवर अंडर डेवलप कराई छ चेनाब is the correct answer in June 2026 a bronze statue of the Maharshi Susruta has been unveiled in which city of Scotland to answer कौन जो आपनकर Edinburgh is the correct answer Edinburgh is the correct answer okay next देखिबा the नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 was observed during which period नशा मुक्त भारत आपनकर 17 ରୁ 26 जून 2026 the Shanghai Cooperation Organization SCO Women's Forum 2026 was held in which city SCO Women's Forum 2026 आपनकर को सिटी होल्ड करछि बिश्केक is the correct answer बिश्केक is the correct answer where was 8th national conference on cooperation held 8th national conference on cooperation हला आपनकर एटी कोन गेला श्रीनगर is the correct answer the golden langur आपनकर रिसेंटली न्यूज़ एतला endemic to which region golden langur आपनकर आसाम एंड भूटान को आपनकर endemic what is the name of the operation launched by India to provide assistance to earthquake hit Venezuela को हमें earthquake assistance जोटा दोचन ता नाटा कोन ऑपरेशन अमिस्ताद okay next देखिबा next question कोन कहूची which Indian city is the host of third Asian Relay Championship 2027 को Indian city आपन गरटी host हेच मते कहंतु third Asian Relay Championship को चंडीगढ़ is the correct answer which country topped the medal tally at the International Shooting Sports Federation Junior World Championship 2026 which country topped the medal tally at the International Shooting Sports Federation Junior World Cup 2026 Championship 2026 तो ध्यान रखना इंडिया इज द करेक्ट आंसर टोटल मेडल केतना 24 टा 17 गोल्ड 8 टा सिल्वर और 9 टा ब्रोंज जीति के आछन हम हला नेक्स्ट देखिबा हां बैंगनपल्ली मैंगो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज प्राइमरीली कल्टीवेटेड इन व्हिच स्टेट बैंगनपल्ली मैंगो आपनकर को स्टेट लोक मते कोन देटी देखिया को मिले कल्टीवेटेड आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द Satayu dashboard to strengthen elderly care services in India which ministry launched the Satayu dashboard to strengthen elderly care service in India तो ध्यान रखना Ministry of Social Justice and Empowerment is the correct answer Ministry of Social Justice and Empowerment is the correct answer which country hosted the Pax Silica Summit to acknowledge USA is the correct answer the second orbit belief of a man the second orbit belief of a man dreams of 1.4 billion hearts is the memory of which astronaut मतलब कौन तो बुक को किए लिखी जंदी सुभांशु शुक्ला is the correct answer next देखिबा the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle was inaugurated in which state तो ध्यान रखना Tamil Nadu is the correct answer hala in June 2026 where was the country's first cooperation based taxi service Bharat Taxi launched तो ध्यान रखना Gujarat is the correct answer okay Gujarat is the correct answer world MSME day is observed every year on which day वर्ल्ड एमएसएमई डे आपण मानकर प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए जून 27 ऑब्जर्व करा जाए हला व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम राहत स्कीम रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन रोड एक्सीडेंट विक्टिम ट्रीटमेंट द कॉर्पोरेट मित्र स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री द कॉर्पोरेट मित्र स्कीम आपण को मिनिस्ट्री द्वारा कराई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कराई हला राइट नेक्स्ट देखिए कोन एमएसएमई मान को सपोर्ट करा जिवो कॉर्पोरेट मित्र थ्रू लोनार लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट आउ 2-3 मिनिट सर जिवो क्लास हला Lonar Lake that was recently seen in news is located in which state? तो ध्यान रखना Maharashtra is the correct answer. Next, a new bacterial species name छाड़ो दो question छाड़ीबा. हाँ ये भी दरकार नहीं. The names of soldiers martyred during Operation Sindoor were recently inscribed on which part of the National War Memorial? एटा ଗୋଟେ important question बनी परिबो. हला
द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स मार्टिड ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर वे रिसेंटली इनस्क्राइब्ड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द नेशनल वार मेमोरियल कौन एटी आंसर हो तो ये आंसर हो मत कहतु त्याग चक्र ओके तो त्याग चक्र आपंकर कराई नेशनल वार मेमोरियल ना को लिखा जाए नेक्स्ट देखा रेवा सुंदरराज मैंगो रेवा सुंदरराज मैंगो आप रिसेंटली न्यूज था प्राइमरली कौटी कल्टिवेट हुए मध्य प्रदेश में कल्टिवेट हुए है जीवा आगू द आस्पायर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री द आस्पायर स्कीम आपंकर को मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट करा मत कहूँ आंसर मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसीबा हाँ नॉनक्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन व्हिच स्टेट तो स्टेट ना होचे आपनकर मेघालय इज द करेक्ट आंसर न्यूज रे कोन पाइतला आपनकर न्यूज रे आपनकर कोन पाइतला देखंतु आपनकर वाइल्ड लाइफ पे गोटे सेफर होम हिसाब रे न्यूज रे थिला हां मेघालय रे बाकी सब जिनस हम देखिबा चलो आगु देखिबा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जून 29 हला नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जून 29 नहीं तुम ठीक कौच ठीक कौच स्पीड रे देखो स्पीड रे तुम बैक करके स्लो करके भी देखी पारिबो बैक करके स्लो करके भी देखी पारिबो हमर टाइमलाइन मु रखुची कि हां 2 घंटा भीतर हम जिंस कवर करबा दीटा पार्ट मु जानि छै एमत्री भी तुम के देखिबो नै नो दीटा पार्ट देखिबो नाही पिला देखु ही ना दीटा पार्ट मु सेहि में मंथली देखो दीटा पार्ट देखु ना तो सेहि हिसाब रे मु गोटे पार्ट रे ही आको प्लान करके नै के आसुची ओके राइट आगू बढ़िया द फास्ट पेट्रोल वेसल रिसेंटली handed PS less power handed over by India to Seychelles was built by which Indian shipyard okay that answer कौन जो मते कहंतु गोवा shipyard limited is the correct answer next where was 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare held okay where was 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare held तो आंसर कौन आपनकर न्यू दिल्ली is the correct answer the fast petrol vessel ICGS Akshay was commissioned at which shipyard in June 2026 Goa Shipyard Limited which state government launched the Go East initiative to boost industrial growth तो Odisha is the correct answer Go East bold step no Odisha हला industrial growth करेगा ठीक है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स मोहन माझी सर हमर बिलव्ड सीएम ओके who has been appointed as the new director of the intelligence bureau IB रो नुआ डायरेक्टर के बनि चंद आपनकर महेश दीक्षित ओके महेश दीक्षित हला एटा रहिला एति के ही थिला आपनकर कंटेंट ओके आउ दिया क्वेश्चन रहला लास्ट दिटा क्वेश्चन कर दियो ठीक है ऑपरेशन चक्र 6 ऑपरेशन चक्र 6 recently in news for cracking down on digital arrest scam was launched by which organization हला ऑपरेशन चक्र 6 आपनकर का द्वारा CBI is the correct answer and Badkhal lake that was recently seen in news is located in which state यार उत्तर आपन माने उत्तर कमेंट सेक्शन में कहिबे मो को देखो नै आंसर को एटा गोटे क्वेश्चन आंसर करबे कमेंट सेक्शन रे होमवर्क एटा अब एटा गोटे होमवर्क करूँ इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे हला ए दिटा क्वेश्चन आपन को होमवर्क रहिला बाकी बुक केमति लागुछ मते निहाती जणैबे बही आपन आई होप आपन बही को मगै दैथिबे सेक्शन सेक्शन करके पढ़ा पढ़ी आपन आरंभ कर दैथिबे इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू बहुत अधिक हेल्पफुल होगा जाऊँ आप बुकटा है बही को समस्त कौन करूँ प्रॉपरली आप बही को भलसे रिविजन कर नौथे है कथा ऑब्वियसली क्लास रे मे भी आपको टिके अप एंड डाउन लगे कि आम स्पीड जाऊँ स्लो जाऊँ खाली क्वेश्चन आंसर कर क्लास फॉर्मेटिंग क्वेश्चन आंसर मुझे कहीदे क्लास फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर क्लास रे मुझे एक्सप्लेनेशन देवाई आसी ना एक्सप्लेनेशन डेली क्लास रोचे वीकली क्लास रे होनी बट डेली क्लास रोचे वीकली क्लास हम एक्सप्लेनेशन मुझे आड करदेवी बट मंथली एक्सप्लेनेशन मुझे आणुना क्या मंथली एक्सप्लेनेशन हम ना अच्छा केमी हम मुझे 50टा क्वेश्चन धरिक आसी 50टा क्वेश्चन को बस एक्सप्लेन करी मत कह मस जगह 50टा क्वेश्चन हम कि मस जगह 100टा क्वेश्चन हम कि 3 घंटा आप 100टा क्वेश्चन 3 घंटा लगे बुझीपार बुझे बुझे पढ़े तो सब प्रकार जिनस अच्छे सेसन थीम ही सैया कि आम MCQ प्रैक्टिस करिया प्रैक्टिस करिया प्रैक्टिस करिया प्रैक्टिस करिया बस सेतिकी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर भाविना दिस इज क्वेश्चन आंसर सेशन तो अकॉर्डिंगली आपन को जदी सुटेबल होउछ आपन निहाती कंटिन्यू करंतु अदरवाइज आपन निज हिसाब रे निजे प्लान करिवे समस्त ऊपर ओपनली जिनस रहला कथा हला बाकी OPSC ASO स्वाभिमान लाइव बैच आपन जदी चाहूचंती ASO बैच तो आपन आरंभ हो जाइए और बैच आगु आरंभ होउची GKGS आरंभ हो सोमवार ठू हला तो जदी चाहूचंत ताले आज ही जॉइन करंतु स्वाभिमान बैच रे मते नंबर रे मेसेज करबे सर लिंक टिके दे दियंतु 8599 848814 है 8599
848814 ये नंबर आपने मेसेज करेंगे स्वाभिमान लाइव बैच लाइव क्लास 900 प्लस मॉक टेस्ट बहुत जिन रही सुपरपास लाइव तो मुझे कहीदेवी काले जॉइन करने कम खत्म हो कौट पाइब ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पाई सुपरपास लाइव लिंक ये वीडियो डिस्क्रिप्शन तुम पाई है एति कथा पुणी देखा गोटे नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट एनर्जी नेक्स्ट ये सहित रही नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां समलेई टेक केयर।